techniques of grammar as well as the questions, how we need to solve in examination, what are the commonly asked questions, what are the commonly confusing questions. Apart from all this, what the scheme of evaluation is, what kind of answers the government or board expect from all of us. All these things today we're going to learn about through this today's webinar. My name is Mohammad Rafeeq. As I have also a YouTube channel where I go on motivating students, that is as a teacher, mentor, and motivator. So as these are my qualifications, right now I'm working as a head of the Department of English at Wisdom School and PU College since 11 years. As I have completed B.Ed, later MA English, MA History, postgraduate diploma in English language teaching from the Regional Institute of English, South India, to improve my language. Later, I have also completed the international course, that is TEFL, teaching English as a foreign language or teaching English to the speakers of other languages, which is commonly called by different name in different countries. Later, I also qualified the international certified career test from Mindler and USA. CDA is Career Development Alliance, USA. I have also qualified the intermediate level test from British Council, UK as well. Later, in the month of January 2022, I have passed TESOL Canada board exam, which in short known as TCB. And I have also qualified the Karnataka teacher eligibility test in 2015. I'm right now preparing for an academic IELTS to move to an abroad to find my future brighter. As today I have given the speaking test of IELTS. Alhamdulillah, it was great. Now we'll move towards the next things of our today's webinar. It was just a brief introduction about me, that you must know me, that who is going to take today's webinar. I have been teaching English since 11 years at Wisdom High School and PU College, and I'm Bidar. I also serve as a board exam evaluator since 2014. Means I go to board for the purpose of evaluating your board exam English papers. These are the deleted chapters. I know that you people are well aware about it, but while studying in serious mode, we do not come to know which are the deleted chapters. So you must be aware of deleted chapter while you are preparing for board examination or when you are going to study about the different chapters. Like in lessons, we have Vilnius Gitmat, which was deleted in 2020 syllabus also due to coronavirus or pandemic corona. And consumerist culture, this year also it has been deleted. Third is about Treasure Island, which is from the non-detail or supplementary reading, you can call it as. In poems, we have Sonnet 73, which is also called as That Time of Year, that has also been deleted. Then one more poem, that is Mending Wall, which has also been deleted for this academic year only. The students who are watching, who are studying in 10th standard this year, means junior 10th, if they are watching, these are not deleted for you people. This is only for this academic year. I got an opportunity through this webinar to assist you all here by rectifying your doubts, queries, and answer your questions, how to pass, how to get a distinction result, and also how to top in SSLC board examination with some new techniques, which I'm going to make you all aware and do best in examination. See, how to pass in English in SSLC board examination. First, you must be aware, the students who want to just pass in examination, they must be aware that the passing marks for English is
is 40. You must be aware about this first, guys. If you are not well aware about the passing marks, by thinking that as other subjects is having 28 marks, science, maths, social, Kannada, Hindi, Urdu, in these all subjects, you are 28 marks for passing. But this is not same in English, which is of 100 marks. And these subjects are of 80 marks. You must be well aware about this also, that how do I score minimum 40 marks? And this is very easy to take, guys. I'll just show you how easy it is. First, you must know, even that you must know how many marks questions in board examination are and how many marks grammar will be. You must be well aware about you must be well aware about how many marks questions are there in examination. There are 67 marks question answers, right? You must be well aware about how many marks question answers and how many marks grammar is. If you just go on doing 2 marks questions along with this grammar, you are going to pass. Or else 1 marks, 2 marks, and few topics of grammar, which I'm going to explain one by one. If you're going on doing that, you are going to easily get passed. Okay. And you are thinking about the 25 marks of activity which your teacher is going to award you for your board examination. That will be directly entering into your marks card. Okay. Keep in mind, this is going to be in marks card, not here in your examination. Here, out of 100, you need to compulsorily take 40 out. In that 67 marks, you have question answers, whereas 33 marks you will have grammar. That is quite easy to do. See, what are the common questions where we get confused? Recently, in preparatory examination, I have observed this. By evaluating some papers of different schools, I came to know that most of the students have made mistakes in writing the answers of this moral action chapter. Have a look over this. What are the different kind of answer you can write in examination? What is moral action? This is the common question which is asked every year in our board examination. You need to write as per Gandhiji. I saw there are some different answers on Google. Don't go on copying it, because the examiner is asking you the question from your reader. Keep in mind, from your reader. It means that you have to write the answers which is given by the Gandhiji, right? गांधी जी क्या बोले ये आंसर के बारे में. You have to write that as per his opinion, what actually moral action is. Don't go on copying it from Google. Okay. See, Gandhi ji says that an action is moral if it is voluntarily. Voluntarily means which is done free of cost, where there is no any kind of profit you see in, and without compulsion. There should not be any kind of compulsion. माने मजबूरी नहीं रहना, कोई नेक काम करने जा रहे हैं आप, वो खुशी खुशी करना है और बगैर कोई मजबूरी के. And there should not be any kind of fear in doing it. जैसा कि we have an example in the chapter that if a teacher, if an employee is going to his duty early, by thinking that if he doesn't go early, then he is going to be removed or terminated from the job by his employer. माने अगर मैं जल्दी नौकरी को नहीं जाऊंगा तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे को निकाल देता होगा, ये डर से अगर उन्हें जा रहा है, again that is not considered as moral action. Again it will be going into the non-moral action. अगर if the same employee is going early in the morning to his duty, by thinking it is my duty, as I have promised that I should come, I will come on this particular time, then that is considered as moral action. There should not be any kind of fear. There should not be any kind of compulsion, and it should be done voluntarily without having any kind of selfishness. माने हमारा खुदगर्जपन नहीं आना, हमारे प्रॉफिट नहीं देखना, हम खुशी खुशी जो काम करेंगे. That is. One more answer I have written here so that it could be easy to remember any of the answers and write in examination. That is an action done
out of one's own benefit. Remember this, one's own benefit माने हमारे बगैर कोई फायदे का अगर हम कोई काम कर रहे, without thought of reward. मैं नेक काम करा तो मेरे को क्या तो मिलता है, like normally we feel if I perform namaz I'm going to get jannah. No, it's not so. If you are going on doing it for that, then it is just for the sake of that. Do it but thinking it is your duty to perform. ये हम समझना है. हम प्रेयर कर रहे हैं हमको स्वर्ग मिलन दे, ये सोच के अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तो that is for the purpose of selfishness. वो हमारे खुदगर्जी के लिए होगा, अपने खुद के लिए हम कर रहे हैं. Not thinking that it's our duty what the God has already ordered us to do. ये समझना है. Reward और ग्रेटिट्यूड माने मैं अच्छा काम करूं, लोगों मेरे को शुक्रिया अदा करना, थैंक यू बोलना, मेरी तारीफ करना है, that should also not be done. Can be called a moral action. The action is moral which is done only for the sake of doing good. माने सिर्फ मैं अच्छा काम कर रहा हूं बल्कि करना है, then only it is considered as a moral action. Now look at over the non-moral action. A non-moral action is one when action is performed mechanically without a sense of ड्यूटी. जहां ड्यूटी नहीं है समझ जाना, वहां हमारा सेल्फिशनेस आ गया, एंड दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज नॉन मॉरल एक्शन. और अवर कंसाइन माने हमारा जमीर, और अवर इंटेंशंस टू डू गुड माने हमारे दिमाग भी नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है, ना हमारा दिल बोल रहा, ना हमारा जमीर बोल रहा है नेक काम करने के वास्ते, फिर भी हम कर रहे हैं, then that is not considered as moral action but it will be considered as non moral action. Now look at this, what is mechanical act? Recently what the difference between moral action and mechanical act बोल के दिया था आपको preparatory में. So have a look. An act done without consign, फिर यहाँ भी वही देखो जमीर, just like a machine can be called as a mechanical act where you are neither your intention nor your consign is allowing you to do, then that is considered as a mechanical act where you are just acting as a machine. And a mechanical act is an act that does not spring from own will. ये बहुत अहम चीज है, ये एक वर्ड है जो आपको एक मास पूरे दिला सकता है, अगर 2 मास में 2 मास पूरे दिला सकता है. You can call it as the key word in the answer. Without having this particular word you are not going to get out of marks, because the work what we are going to do, if it does not come from our own will, then it will again go into the non-moral action or mechanical act. But rather like a machine, then it is called mechanical act. These acts are performed without one's intelligence as well. Okay? These are the different confusions what we commonly make while writing the answers of moral action chapter. Have a look, some more questions on this related to this. What is an intentional act then? Intentional act क्या है फिर? An intentional act is one An intentional act is one which is done with sense of one's duty. Again, you need to think that it's your duty. For that reason, you are doing this particular good thing, right? Like we serve our parents. पापा बहुत अच्छे पापा, तुम्हारे सर के पापा कोई भी नहीं, बल्कि हम पापा के पांव दबा रहे हैं, सब कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं. पापा बोल रहे हैं सुबह से क्या पता बच्चा सब कर रहा है, फिर आखिर में बोल रहे हैं अब जरा गाड़ी दिला दो ना, जरा 500 रुपए दियो. So we are going on just showing off without thinking our own duty. Then that is not considered as a moral action or an intentional act. Intentional act which is done with a sense of one's duty. We need to think it's our duty to do it. Or else an intentional act is one that is springs by our own choice. माने खुद की choice रहना, खुद की खुशी से हम जो नेक काम करेंगे, that is considered as intentional act. Now what is conventional behavior? Following customs. See, convention माने होता है custom, रस्म और रिवाज, rules, regulation. Following customs and tradition blindly without knowing whether it is right or wrong. We are following it, and acting mechanically is an example of conventional behavior. It does not involve any kind of morality. Morality कहाँ आती है? जहाँ आप right और wrong में differentiate करना, then there will be morality. If without seeing the difference between the right and wrong, whatever the act you are doing, and you are following is nothing but just a conventional behavior, whatever the customs of a religion we follow. Now, this is a common question which is asked for 3 marks in examination. All actions need not be moral act. सब action हमारे जरूरी नहीं है कि moral action होना अच्छी बात है, but it's not possible for anyone to do all the acts morally.
but we can try our level best to make our all acts as moral act. When does good action become a moral action? We do many good things in our life, but we cannot, nobody can judge that this act is compulsorily called as a moral act. Why? What the reason behind it? Because a good act becomes a moral act when it is done with an intention to do good. Means there is a requirement of having your intention to do good. Then only your act is going to be called as a moral act. Whether act is moral or not, that depends on the intention of the doer. माने आप जो काम कर रहे हैं वो सही, मैं नेक काम अगर को कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी समझ को कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये अहम है. आपका इंटेंशन बहुत जरूरी है. आप देखिए कौन सा भी आप काम करने जाओ, कई बार हम अच्छा काम करने आते खराब हो जाता. But people say us that you are bad, you have done the wrong thing. But when they come to know about the intention, they go on telling, yeah, it has happened by mistake. ये गलती से हुआ होगा, he is a good person. So our intention is very much important. We have an example of a reader. Two men may have done the same thing. The act of one may be moral, whereas other one is contrary, means opposite. अब दो लोग सेम काम कर रहे हैं, जिसमें से एक का काम जो है वो moral है और एक का काम जो है opposite हो सकता है, that is non-moral. For example, a man one who feeds poor, एक आदमी लोगों को, गरीबों को खाना खिला रहा है, feeds poor out of pity, उनके ऊपर रहम खाकर, हमदर्दी से, and other who does the same but with the motive means aim or objective of winning the prestige माने respect. मैं क्या बोलेंगे आप उसको, सखी हूं, मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं, दिखाने के वास्ते जो इंसान काम कर रहा है, we cannot call that particular person as a moral act. Or some such selfish and माने अपने खुद के फायदे के लिए जो काम करेंगे, that act is also not called as a moral action. Though the action is same, both are doing the same act. उन्हें भी खाना खिला रहा है, इन्हें भी खाना खिला, पर उसकी नियत खाना खिलाने की है, गरीबों को हमदर्दी पे, अल्लाह मेरे को पैसे दिए बोल को मैं खिला रहा हूं, मेरा दूसरा बुरा नहीं, मेरे को लोगों के सामने मालूम होना मैं भी सखी हूं. The act of one which is moral and the other one is non-moral because of only not having his own intention to do good thing. ये अहम है. इतने छोटे चीजें अगर आप समझेंगे तो moral action के चैप्टर में आपको कोई कॉमन कंफ्यूजन नहीं होगा. ये छोटे मोटे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स हम आंसर लिखने के बाद भी गलत हो जाते हैं. We need to be very much aware about these kind of answers. Now, a scheme of evaluation, it's quite long. So I kept in the description box, means I'll show you at the end of this particular presentation. Okay. And I'll also upload it in the YouTube channel so that you could be later on watching over the answers, what kind of answers asked by the board, and you will be able to write in board exam as well. So मैं खाली बता रहा नहीं, उसको description box में भी डाल देता हूँ so that you can download it from there. Grammar topics with best technique today we're gonna solve out. Okay, have a look over. See guys, क्वेश्चन टैग के अंदर कॉमन हमको 4-5 चीजें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है. मैं जल्दी तेजी से जा रहा हूं क्योंकि we have very less time to complete huge topics. So okay, when the sentence is in negative, okay, positive, you need to remember that the tag should be नेगेटिव इंटरोगेटिव. माने सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आता है, हमें नॉट के साथ क्वेश्चन फॉर्म बनाना है. अगर सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट आता है, इफ देयर इज ऑलरेडी नेगेटिव इन द सेंटेंस, नॉट आ रहा है, वी नीड टू जस्ट गो ऑन एडिंग ओनली इंटरोगेटिव इन द क्वेश्चन फॉर्म. एंड रिमेंबर दिस, add aren't I for I am. Okay, it should be I am tag for I am in the sentence and add am I for the I aimed. असल तो I aimed होना नहीं, I ain't होना है ये. ठीक है, जब भी I ain't आएगा सेंटेंस में तो आपको am I लगाना है, मगर जब भी I am आएगा aren't I लगाना. अगर आप ain't I लगेंगे तो it is completely going to be considered as incorrect. This is the common mistake what student make while writing the exam of English, especially solving the topic of question tag. And for command and order, some kind of questions come like close the door, sit down, do your work, mind your own business. Such kind of sentences are called as command and orders, and that have to be questioned or that have to made a tag as will you. And when the sentence has a word called let's, जब भी sentence में अगर let's दिख रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, shall we ऐड करेंगे, because let's को अगर हम देखेंगे तो let us हो जाता. ठीक है, for that reason we need to remember this as well. And never use a proper noun in the tag. ये सबसे अहम चीज है, याद रखिएगा. कभी भी सेंटेंस में आपको अगर किसी का नाम आ रहा है तो वही नाम क्वेश्चन टैग में आप
नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल रफीक सर इज टीचिंग इंग्लिश बोलेंगे तो हम isn't ही बोलेंगे, समझ में आ रहा है? या कोई लेडी टीच करे तो isn't she बोलेंगे, but you cannot add isn't Rafeeq, right? This is the most important thing you need to remember while solving the answer of question tag. Now these things are very very important for your board exam purpose, because these three things if you remember you are going to get 4 marks. सर बोलेंगे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का टॉपिक है सर, आप 4 मार्क्स कैसा मिलते हैं बोल रहे हैं? These common things are going to be in question tag. Frame the question as soon as, no sooner than, right? ये कई टॉपिक्स में आपको कॉमन मिलेंगे जिसकी वजह से आप बार बार एग्जाम में मार्क्स जाते हैं. Have a look over once. V1 जब भी आंसर सेंटेंस में when you find V1 have or word called right, then you have to go for question tag with do. Normally we make mistake by adding is, have के लिए हम have ही लगा देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स चले जाते हैं. And for V1 plus S it is nothing but equal to has or writes, and for that you need to use the word does. And you need to remember, you need to use does and here do. And when you are finding a word called V2 in the question, then you need to go with did. Don't go on adding wasn't, weren't, or hadn't something else. Okay. These are the helping words for these three. And most of the time, 99% I can guarantee you, in exam, the question is going to be from these three only. In question tag and frame the question and as soon as, no sooner than. ये तीनों टॉपिक में कंफर्म गारंटी से बोल रहा हूं आपको, मैं इन्हीं के ऊपर पूछता हूं. हूनाबल को कंफ्यूज करने के लिए आपको डू डज डिड के अंदर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अगर आपको इज एमआर देगा उन्हें, यू कैन इजीली ऐड इट. आप आराम से कर लेते, शी इज माय सिस्टर बोलते इजंट शी कर लेते, ठीक है. दे विल कम टुमारो, वोंट दे, ये इजी से हम कर लेते हैं when there is a helping verb in the question. But when there is no helping verb in the question, it is quite difficult for any student to answer correctly. Have a look. I have written 3 examples here. They study at Wisdom School. See, and this is also very important to remember. And if you are writing in exam, the answer of question tag, you need to write full question, then put a comma and write with a small d. माने जो भी helping verb लेंगे आप, small लेके आप लिखेंगे ऐसे. आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, पहली चीज. हाँ, अगर if you are not writing the question and you are directly writing the answer, then you can go with a capital letter. But most of the time, what the student write, that they write in this way only, and that is the right and acceptable way of answer in question tag topic. She likes chocolate. See, here we took study V1. For that reason, we have come with a do word, right? Don't they? She likes chocolate. See, likes is nothing but V1 plus yes. For that, we have moved with a doesn't as a question tag. And here V2, decorated our car for a party, didn't we? You need to remember, this is very very important, guys. अगर आप do does date को समझ गए, you are going to easily secure 4 marks in different topics. Apart from this, if a question is asked about tenses, in tenses also they're going to ask either in simple or simple present or simple past. There again you are going to feel difficulty in identifying the tense of the sentence. So please do remember these things. And one more thing you need to remember, have a look here. If you find a sentence is having have plus V3, like have written, example, they have broken my toy, haven't they? अब बोलेंगे सर अब भी आप बोले have आया तो V1 do लियो बोले, and now you are taking haven't here. See, that is what I wanted to show you people. Whenever you find have, has, had with V3, you need to be very cautious while writing it. The same helping verb will be used in question tag. If have, has, had will be there in the sentence along with V3. Keep in mind. If there is no V3, like I have a cup of tea, don't I? She has a scooty, doesn't she? They had a toy, didn't they? In this way we have to write, because there is no any verb after have as in this simple present tense and simple past tense. But this is present perfect and past perfect. This is last one is past perfect, whereas these two sentences are from present perfect. So here after have you can see here broken V3. For that we are taking haven't they. She has solved, again V3. For that we are taking hasn't she. And you had cancelled our farewell program, hadn't they? Because after had we have V3, that is cancelled. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चन टैग में आमतौर पे हमारे आंसर जाते हैं या ये याद रखने से ये भूल जाते हैं, ये याद रखने से ये भूल जाते हैं.
तो have has had आ रहा है और क्वेश्चन फॉर्म नहीं, उसके आगे वर्ब नहीं है, you have to go with do does did. If there is a verb, you have to go with the same helping verb. जो have आया तो have it, has आया तो has it, had आया तो had it. There is no any change in it. Okay. Have a look over frame the question. यहाँ पे भी वही चीज इंपॉर्टेंट है. You need to remember the same thing here as well. Have a look over the interrogative pronouns. आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी है. WH form, who, what, whom, whose, which, where, when, why, how. These are the 8 WH form that 9 WH form that you need to remember very necessarily to answer every question of frame the question, because the definition says frame a question so as to make an underlined word as an answer. माने सबसे पहली चीज आप ये लाइन को याद रखना. माने ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि अंडरलाइन जो वर्ड है वो आंसर आना. समझ में आ रहा है? ये जहन में सबसे ज्यादा जरूरी है. और यहाँ पे भी कंफ्यूजन, अगेन you'll have the same confusion with V1, V1 plus yes and V2. अगेन फिर यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दे दिया तो you'll have difficulty in answering it again guys. तो यहाँ फिर वही बता रहा हूं मैं आपको कि यही याद रखना है. V1 have आ जाएगा तो अगेन you have to go with do. V1 plus yes has के साथ फिर does. V1 V2 had wrote के साथ में फिर did. फिर जब V3 आएगा तो same, there is no change. Same have as helping verb in the question. Same has will be helping verb as in the question. Same had will be in the as a helping verb in the question. यहाँ पे common. Again फिर ये टॉपिक भी जरूरी है. You remember simple present and simple past. Have a look over the question. आप क्वेश्चन देखें तो ऑटोमेटिकली come to know. I wake up at 6:30 every day. Now the time is underlined. आप कॉमनली अपने आप में जरा हिंदी में सोच लेना, आपको आंसर आ जाता है. That which WH form you have to exactly use to make your answer appropriate. Have a look over. टाइम को निकाल दिया आप. I wake up, मैं 6:30 बजे रोजाना उठता हूँ. 6:30 को निकाल दिया मैं. अब क्या आता है? I wake up every day. मैं रोजाना उठता हूँ. हमारे दिमाग में आता है कब उठता हूँ. Directly we will go with the word when. Take an example. When do I wake up every day? See, there is a requirement of putting this question mark. This is very important guys. In question tag also you have to, even if your answer is right, if you do not put a question mark, again you are going to lose. I have seen this with my eyes in second year papers board exam evaluation. मैं second year के board exam में मैं जानते बल्कि बच्चों को एडजस्ट करके बच्चे क्वेश्चन मार्क नहीं डाले तो बिल्यू पे से डाल के उनको आंसर्स दिया. जानते बच्चे आंसर सही है बल्कि they forgot in hurry of writing putting the question mark. But what I have seen, the person who was evaluating beside me, he was completely just putting wrong to all the answers because of not putting a question mark. When I asked him, मैं बोला सर बच्चों के आंसर सही है, मार्क्स दे दीजिए. He said no sir, it's a rule. Question, frame the question माने क्वेश्चन कब पहचानेंगे आप? जब क्वेश्चन मार्क रहेगा. तो आपका आंसर अगर सही है, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लेते, again you are going to lose your marks even if your answer is right. तो अब देखिए, wake up आने की वजह से what we have done, we have used do as a helping verb. When do I wake up? Every day. She always eats. V1 plus S. Eats many different delicious food in Mumbai. Vedas in Mumbai is underlined guys, remember. अब वो लड़की रोज delicious food खाती है बोल रहे हैं हम. कहाँ खाती है? घर में खान दे, जगह पे खान दे, that will be a question. तो हम ये जहन में लाना हिंदी में. Automatically will get the answer. Where does she always eat? हाँ ये भी जरूरी है. देखें, जब भी सेंटेंस में do यूज कर रहे हैं आप, does यूज कर रहे हैं आप, did यूज कर रहे हैं आप, you have to always go with V1 only, whether the sentence is having V1 or V1 plus S or V2. But when you are writing the question form by using do, does, did, you have to always go with V1 only. ये भी जरूरी है बहुत ज्यादा. आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ eats ले लिए, यहाँ भी ले लेंगे. When does she eat? Eat की जगह eats और बोलते हैं माँ सही लिखी थी, मास चले गए. नहीं जा, कब जाती मास? ये सेंटेंस ये V1 होना जरूरी है. This you need to remember. Okay. Now they prepared many different projects. सब many different project को हटा दिए. They prepared. उन्होंने बनाए कहते क्या बनाए? ठीक है. What did she prepare? Again see here V1 I'm taking here. Even though here it is V2, because when you are using helping verb, whether it may be do, does or did, you must use only V1 with that, or else your answer is going to be considered as wrong. Now she has lost. See, I have taken an example of this have as had.
ये तीनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना होगा. इसका भी एग्जांपल ले लो. मैं she has lost everything because of his silly mistakes. Sorry, he has lost everything because of his silly mistakes. How has he lost everything? Because of silly mistake is underlined, right? तो ये has के लिए same has आ गया. देखिए, तो ये ध्यान में रख लेना है कि whether the have has had this present perfect and past perfect is coming with V3 or not. If they are V3, the have will be with have only, has will be has only, and with had it will be had only. Remember these things. Okay, I will move for the next topic. Okay, now to show that, guys, this is going to be for about 2 marks in examination. 2 marks में आता है. Frame the question tag आपको 1 marks में आता है normally. ये 2 marks में आता है, मगर कभी-कभी 1 marks में भी आ सकता है. मगर 1 marks में आए तो क्या confusion होता है, that I'm going to show today. ठीक है, 2 marks के लिए तो हमको normal सी बात है कि भाई ये 2 हम लगा लेंगे, ये एक सेंटेंस बन जाता है, इनका एक सेंटेंस बना दिया तो 2 marks हो जाती. ओके, ठीक है. बट इसमें सबसे अहम चीज है समझने की हमारे को कि अगर 1 मार्क्स से पूछा तो क्या डिफिकल्टी होती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द एडवर्ब टू इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव, वी एक्सपैंड द सेंटेंस इनटू 2 क्लॉजेस. 2 अलग-अलग सेंटेंस बनेंगे. द फर्स्ट कंटेनिंग सो एंड द सेकंड वन कंटेनिंग दैट. इफ द सेंटेंस कंटेनिंग टू is in the affirmative, माने यहाँ पॉजिटिव की बात होती है हमेशा. समझ में आ रहा है? अब टू सो दैट बनेंगे. अब she is too short to touch the roof, ये पॉजिटिव की बात हो रही है. the sentence containing so that can be negative, will be in the negative, माने ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? कंपल्सरी नॉट आता. देखिए आप, she is so short that she cannot touch the roof. So here we go on seeing the negativity in the sentence when we are using so that. For that reason, this needs to be understood first. See, what do you mean by to? A question will be given, a question will be having always very. What do you mean by very? Very is nothing but equal to so and to. यही याद रखना है बस. This is very important, then you need to remember, and this is the most important in it. जहां very ले रहे हैं हम, वहीं पे हमको to लगाना है, वहीं पे so लगा के सेम जगह पे कोई चेंज करना नहीं जगह. There you have to write the answer by using to and so that. And this is most important again here. जब भी sentence में is है मारा उसके साथ compulsory can't ही आना है. That you need to remember a lot. And when you find the sentence in the past by using was, were, it must be with could not. And if you are going on adding was, were with can't, is answer is going to be completely wrong, because you cannot go from past to present and from present to past. So please don't try to make this mistake. अब ये याद रखना क्यों जरूरी है. जब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो वहां पे जरूरी हो जाता है. that I'll show with an example. First have a look what kind of answer you need to write in examination. He is very weak. See, he is very weak. Very is nothing but, as I told you people already, that to and so same meaning. He is very weak, he can't. See, I told you, is MR के साथ में compulsory can't. Run fast. He is too, in the same place I'm using, guys, need to be observing here. He is very की जगह पे to लगा दिया मैं. Okay, weak, and here the full stop is there. वो full stop की जगह पे क्या करना है? What you need to do? You need to add the second to. This is, you need to add here to, and you need to deduct this. इसको उड़ा देना है. डायरेक्ट यहाँ पे टू लगाना और ये आगे के सेंटेंस को, आगे के वर्ड्स को ले लेना आपको. Too weak to run fast. ओके, to run fast, directly we are adding it. अब मैं आगे लिखूं क्योंकि फिर ज्यादा स्लाइड्स होते थे. आप नीचे लिखेंगे ना तो एक ही लाइन में आप भी मेरे सर का लिख देंगे दोनों आंसर्स. You are going to lose your marks. So this is 2 marks. Okay, yeah, too weak to run fast, and in so that you have to write the complete sentence of second one. Okay, in to so that you needed to go with this. Have a look. He is so weak that, see, so I'm using on the same place. He is on the place of very I'm using so. Weak that where I'm using here, where I've used instead of full stop I use to, and the same place you have to use with the so. So weak that he can't run fast. The second sentence will be added same
as it is in the question form after adding that. Okay. And apart from this, the class was very small. One more question I have given in past. Guys, this question by using is, I showed you how it will be in present tense. By using was, I'm going to show you how it can be used in past tense. The class was very small. We could not sit comfortably. The class was too small for us. This is also very important. If a sentence is having two pronoun, here also pronoun, here also pronoun, then you need not to use this for me, for us, for them. But if you find other thing apart from pronoun or proper noun, अगर नाम नहीं आ रहा, I, we, the, he, she अगर नहीं आ रहा, ऐसा the class, the city, this school, ऐसा कुछ भी आ रहा है और आगे यहाँ pronoun आ रहा है, तभी आपको for me, for us, for them के साथ जाना है, वरना directly you have to write the sentence as we have done here upside. Okay, the class was too small for us. How we are getting for us? Because of we. For us to sit. Here you need to delete this in the first sentence. To sit comfortably. The class was, sorry, okay, this is not the class was, see, you need to pronounce the when you are beginning the sentence with THE. And if it is coming in the center of the sentence, you have to pronounce it as the. Okay, the class was so small that we could not sit comfortably. In second sentence, you will not have any difficulty because you have to copy both the questions by just changing very on the place of very with so on the place of this full stop that. That's it. इतना ही है, दूसरा क्या भी चेंज नहीं इसमें. अब यहाँ समझने की जरूरत है कि एक मार्क्स में क्वेश्चन कैसा आ सकता है सर, जिससे हमारे मार्क्स जाते हैं. एग्जाम्पल, he is too short to touch the roof. अब एग्जाम में बोलता है आपको change the sentence by using so that. सेंटेंस को यूज करो, so that यूज करो, so that में इसको कन्वर्ट चेंज करो बोलता है 1 मार्क्स में. अब तुम्हारे को मालूम ही नहीं हो रहा है इसमें कि उन्हें कांट यूज करना है क्या कुड नॉट यूज करना है. नॉर्मली it is going to be for 2 marks. Okay, so he is too short to touch the roof. So here we don't know what to use, whether it can't or could not. For that reason, I have showed you here is MR. Whenever you find sentence has is MR, you have to go with can't. Like, have a look. I will write the answer. He is so short that he cannot touch the roof. अब देखो यहाँ एक ही चीज है, देखो पहले ध्यान में रख लियो आप. जहां वेरी ले रही वहीं पे टू लेना है, जहां टू ले रही वहीं पे सो लेना है. ये दिस इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टॉपिक. एंड जो सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में जो हम ही कांट लेते हैं, he can't run fast, ये सेम ऐड करना है after adding that in the exam, in the question, in the answer sheet. Okay, he is so short that जो full stop आ रहा है वहां पे that he cannot touch the roof. तो ये होगा कॉमन. अब so that में कैसा आता सर क्वेश्चन? How will we get the question in so that? अगर so that में कन्वर्ट करना है तो कैसा आ जाएगा? ठीक है. The question was too difficult for me to answer. The question was too difficult for me to answer. अब normally was देखते समझ जाना, could के साथ जाना है.
बट ये याद रहना जरूरी है, तभी जाके एग्जाम में लिख सकते हैं. और also difficulty in understanding because we will be always in a hurry while writing the exam. तो वो जरूरी है समझने के लिए कि इज एम आर के साथ हमको कांट लेना है, वाज वर के साथ में कुड नॉट लेना है. तो यहाँ पे द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर अस फॉर मी टू आंसर. अब यहाँ पे इसका सो दैट कैसे लिखेंगे हम? द क्वेश्चन was on the place of two so difficult that the question was so difficult that. अब सर हम आई लेना वी लेना क्या लेना सर कैसा मालूम होता है? प्रोनाउन ठीक है, आप ये बता दिए हम वाज आया तो कुड नॉट लियो. बट मी की जगह क्या होता है? व्हाट डू वी यूज ऑन द प्लेस? मी कम्स फ्रॉम आई, राइट. हर एक वर्ड के प्रोनाउन के 5 फॉर्म होते हैं, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ. So in same way you need to understand. I का me होगा, you का you होगा, we का us होगा, they का them, she becomes her, he becomes him. So that you need to be remembering, okay, while writing the examination. So here me and the place of me I'm adding I. The question was so difficult that I could not answer. That's it. ऐसा 1 मार्क्स में एग्जाम में दे रहा तो कंपलसरी you are going to lose your marks. But if you remember this formula, can and can't, easily you are going to rock an exam in this topic. Okay, ये कॉमन चीजें आपको याद रखना जरूरी है. और फॉर मी कब लेना, फॉर मी कब नहीं लेना, एक एग्जांपल उसका बता. ठीक है, ही इज वेरी फैट, he can't रन फास्ट. ठीक है, अब यहां भी ही आ गया, यहां भी आ गया. जब भी 2 प्रोनाउन आपको सेंटेंस में देखने मिलेंगे, यू शुड नॉट गो विथ फॉर मी फॉर अस जो यहाँ है, यू शुड नॉट गो ऑन डूइंग इट. ओके, यू हैव टू डायरेक्टली गो ऑन राइटिंग इट. तो ही इज वेरी फैट, ही कांट रन फास्ट, ही इज too fat. See, on the place of very I'm using too fat, this you needn't to take because repetition is not at all possible to be done in English. So too fat to run fast. He is so fat that he cannot run fast. Right, he is so fat that he cannot run fast. The same way you need to write. Remember, I'm not writing when there will be 2 pronouns. I have not added this for me, for us, for them, for her. ये चीज नहीं आएगी. ये ज़हन में रख दे अच्छी तरह से. यहाँ पे मार्क्स चले जाते हैं हमारे, ये चीज याद रखना जरूरी है. Now we'll go for the next topic. I will look over as soon as, no sooner than. Okay, as soon as, no sooner than. Again, this topic is going to be for about 2 marks in examination. एग्जाम में ये आपको फिर 2 मार्क्स के लिए रहेगा. जहन में अंदर जैसा 2 to so that आपको 2 मार्क्स के लिए है, ये भी 2 मार्क्स के लिए रहेगा. 1 मार्क्स में भी आ सकता है, but mostly this question has been asked in examination for about 2 marks. Have a look over. He went to market about vegetables. ठीक है. You need to remember one thing, that whenever you are writing the sentence, whenever you are reading the question in the exam, you need to remember there should be 2 sentences. One sentence cannot be converted into no, as soon as and no sooner. सर ये बाजू, hardly, scarcely, barely क्या है बोलेंगे, जरा नया दिख रहा है. ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, पर 2019, 2017, 18 में पीछे आ चुका है. अभी तक 2 साल से तो नहीं पूछा, मगर पूछ सकता है. For that I have added that topic as well with as soon as, no sooner than. Okay, तो इसका मैं लास्ट में एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, पहले as soon as को देख लेंगे अपन. तो he went to market, he bought vegetables. अब देखो, सबसे अच्छी चीज ये है कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स आसानी से कौन सा बच्चा ले सकता है. हाउ? बाय यूजिंग as soon as. क्योंकि as soon as में क्या भी ऐड करना नहीं है, जैसा दोनों सेंटेंसेस है दोनों को सेम लेना है. टेक एन एग्जांपल, as soon as event. अब यहाँ सबसे अहम चीज ये है,
मैं ज्यादातर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में देखा हूं बच्चों के दैट दे यूज कैपिटल एच. सर यहाँ था ना सर, he went to the market, it is already capital ना सर. तो ये फर्स्ट वर्ड है, आप पहले ध्यान में रख लियो. कैपिटल कहाँ कहाँ आना है एग्जाम में, हमेशा कैपिटल की वजह से भी मार्क्स आपके, बार बार कैपिटल आप कहां बोलना लिखेंगे तो भी मार्क्स जा सकते हैं. कैपिटल सबसे पहला जब सेंटेंस पैराग्राफ चालू कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, फर्स्ट वहां पे कैपिटल लेंगे. सेकंड कैपिटल विल बी आफ्टर अ फुल स्टॉप. उसके बाद थर्ड कैपिटल आफ्टर अ क्वेश्चन मार्क. फोर्थ कैपिटल कब आ सकता है, आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन मार्क. फिफ्थ कैपिटल कब आता है, व्हेन यू आर राइटिंग समबडीज नेम, इट कुड बी अ प्लेस नेम और अ पर्सन नेम, वहां आ सकता है. उसके बाद आ सकता है डबल इन्वर्टेड कामा में, जब भी जो भी चीज लिखेंगे आप, डबल इन्वर्टेड हो रहा हूं, सिंगल इन्वर्टेड में नहीं आएगा, डबल इन्वर्टेड जब भी लिखेंगे आप, उसमें भी फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल आएगा. अगेन व्हेन यू चेंज द पैराग्राफ, अगेन यू हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर एज कैपिटल. ये इतनी जगहों के अलावा रेयरली यू फाइंड कैपिटल सेवरल्स. ओके, तो ये चीजें इतने याद रखिएगा, कैपिटल कब लिखना है. अब ये बताइए बीच में आ रही है आफ्टर, एज सुन एज इट इज कमिंग, हाउ कुड यू ऐड इट एज द कैपिटल, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर, याद रखना जरूरी है. As soon as he went to market, see the full stop becomes comma. ये जरूरी है. मैं देखा हूं कुछ बच्चों के आंसर्स that they have added the same full stop. How it is? If you go on writing the same question, then how it will be considered as an answer? अगर आप जैसा क्वेश्चन है सेम वैसी क्वेश्चन के टाइप में आप आंसर लिखेंगे तो उसको आंसर कैसा बोलेंगे. सो यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, आफ्टर राइटिंग एज सुन एज द सेम सेंटेंस यू नीड टू राइट, बट इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप वी हैव टू राइट comma, and again second sentence will be same as in the question form. But here also you need to remember that the he is going to be, h of he is going to be also small, that you need to remember. Okay, so he bought vegetables. The same questions, whatever are there in the question, the same you have to copy in the answers. But at the time of writing no sooner, you'll have little difficulty. थोड़ी difficulty यहाँ पे हो सकती है, मगर इसके लिए भी मैं बता चुका हूँ already that most of the questions will be in do, does, did, to just confuse you whether you are capable of using the proper helping verb, especially in simple present and simple past. ये दो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप ये समझते हैं, मैं इससे पहले बता दिया आपको पीछे, have, has, had, write, writes, wrote, अगर वो समझते हैं, you'll be able to easily get 2 out of 2 in as soon as, no sooner than as well. अब यहाँ पे देखिए, this is V2, went. For that reason we are going with the did as a helping verb. No sooner did he go. अब बोलेंगे सर ऊपर हम जैसा था वैसी लिखें, यहाँ भी जैसा है वैसी लिख रहे हैं, खाली ये जो हेल्पिंग वर्ब जो ही वेंट आ रहा है, ये ही से पहले हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, उसे हम पहले लगा के सेम ही went की जगह पे go, बाकी का same. And on the place of comma, which we have added in as soon as, the same comma is replaced by than. उसी की जगह पे हम क्या करने वाले हैं, than ऐड कर दिए हैं. फर्स्ट सेंटेंस में आपको फर्स्ट as soon as में क्या करना है, फुल स्टॉप को आपको कॉमा बनाना है, whereas in second sentence on the same place of comma you have to write than. Remember that. ठीक है, than लिख के पे जैसा सेम सेंटेंस है ऊपर का, you have to write same. तो इसमें एक अच्छी चीज ये है, as soon as में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पहले as soon as लगा दियो, दोनों सेंटेंस को कंटिन्यू लिख दियो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, जस्ट बाय एडिंग ए कॉमा. मगर नो सूनर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एंड दैट कुड बी इजीली रेमेडीड. उसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसा? बाय एडिंग जस्ट after no sooner there should be a helping verb. An appropriate helping verb need to be added. Did he go to market then? ये then के लिए थोड़ा confusion क्या हो सकता है बोलता हूँ, कहाँ लगाने में confusion बच्चों को हो सकता है, but you needn't to worry. Just remember the full stop of the first sentence or between the two sentences. There you need to go on placing it, and you needn't to change anything in second sentence. That's a good thing. आपको second sentence में कोई चीज change करने की जरूरत नहीं है, ओनली फर्स्ट सेंटेंस में, और वो भी सिर्फ नो सूनर में. याद रखते हैं एज सूनर में तो कंपलसरी कोई बच्चे को गलती नहीं होना. सर 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ सकता है. कब पूछ सकता है एग्जाम में? उन्हें जब उन्हें खुद एज सून एज में दे देता सेंटेंस, देखो बोलता है चेंज द सेंटेंस इनटू नो सूनर एज और रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर. इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है आपको. अगेन देन यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस बाय फॉलोइंग दिस. ठीक है, इतना. अब सर यहाँ हमको कैसा कंफ्यूजन होता, कंफ्यूजन हो सकता है क्या? वही कंफ्यूजन होता है V1 प्लस यस या V2 का, दूसरा कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता. ठीक है, लेट्स गो विथ द सेकंड एग्जांपल. ही हैज पास्ड. सी आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये भी जरूरी है.
फिर वो हैव हैज की कंफ्यूजन फिर आप लोगों को हो सकता है. For that, he has passed SLC with a distinction result. Full stop. He has got an award. As soon as he has, see he again small. He has passed SLC with distinction result, comma. This is very important and that is going to give only you 1 marks. आप ये लिखे तो आधे मार्क्स पकड़ के चलो आप. As soon as लिखे तो आधे मार्क्स. 1 मार्क्स अगर होना है as soon as में तो ये भी as soon as कंपलसरी आना है, ये स्मॉल होना है और यहाँ कंपलसरी कॉमा आना है. Till then you are not going to get even 1 mark also. तो याद रख लीजिए, ग्रामर is going to be evaluated very क्या बोलेंगे आप स्ट्रिक्टली. तो बहुत बारीकी से चेकअप होता है, इसका इवैल्यूएशन होता है, ध्यान में रखते. He has got an award. The second sentence does not have any kind of change, whether it may be in written in as soon as or no sooner than. दोनों में कहीं में भी लिखा है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब नो सूनर में क्या करना है, हेल्पिंग ऑफ जो क्वेश्चन के अंदर आ रहा है हमारे, इसी को गर्दन पकड़ को पीछे ले आकर छोड़ना, खत्म. जस्ट टेक दिस हैज. अब यहाँ अभी क्या क्या आ सकता है सर, यहाँ पे हमको ये तो समझ में आ गया सर, आप बता दिए हमको. V2 आया तो बता दिए, V1 आया तो बता दिए, V1 प्लस यस बता दिए, हमको समझ में आ गया. डू डज डिड के साथ रहना है. मगर हेल्पिंग वर्ब आया तो क्या क्या आ सकता है, रिमेंबर, और एल्स टेक ए नोटबुक and a pen with you people to write the important things what I'm telling which you can't remember for a longer duration. First, is आ सकता है, M आ सकता है, R आ सकता है, was आ सकता है, were, then have, has, had, will, shall, can, could, should, may, might, must, कुछ भी आ जाते. खाली पकड़ना, पीछे ले आको सब्जेक्ट के पीछे रख देना. Subject is nothing but the first word which is pronoun. और इट कुड बी अ नाउन. नाउन प्रोनाउन क्या भी रहते हैं, उसके बाद ही कंपलसरी हेल्पिंग ऑफ आता है, उसको पकड़ के पीछे ले आ, छोड़िए, दैट्स इट. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चन फॉर्म. ठीक है. तो एज सुन एज ही हैज पास्ड SSLC एग्जाम विद डिस्टिंक्शन रिजल्ट, ही हैज गॉट एन अवार्ड. नो सूनर हैज ही पास्ड SSLC एग्जाम. देखो खाली हैज को पीछे ले, खत्म. इसी का 1 मार्क्स है, ध्यान में रख लो आप. कैसा यूज करता क्वेश्चन फॉर्म के लिए उन्हें, डिस्टिंक्शन रिजल्ट, देन ऑन द सेम प्लेस वेयर वी हैव एडेड हियर कॉमा as well as we change comma from full stop in or replaced comma at the place of full stop, in same way you have to place then between these two sentences to combine them. समझ में आ रहा है सर क्यों लगाना, ये है क्या आखिर, these to show that as soon as, no sooner than, and either or, neither nor, these all words are coordinating conjunctions. These are conjunctions. I hope that you people remember the definition of conjunctions. Conjunctions are a linking, connecting or joining two different sentences into single one. तो दो अलग अलग sentences को single एक में लिखने के लिए जो words इस्तेमाल करते हैं, that are called as conjunction. This no, then is also a conjunction which is connecting two different ideas into single one. समझ में आ रहा है. आप देखिए ही वेंट टू मार्केट बोले तो क्या होगा, ये एक इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंप्लीट मानेश नहीं आ रहे उसके कुछ भी. इट्स नॉट अ राइट सेंटेंस, खाली इतना बोल दे मार्केट गया, क्या करा क्या नहीं. व्हेन यू ऐड दिस एंड ही बाउट वेजिटेबल्स, एंड लगेंगे ही बाउट वेजिटेबल, जब सेंटेंस दोनों कंप्लीट होंगे. समझ में आ रहा है. तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कनेक्टिंग देम टू गिव अ कंप्लीट सेंस. सेंस मींस मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग कौन से भी सेंटेंस को देने के लिए वी नीड टू हैव a conjunctions. See, मैं IELTS जो एग्जाम दिया, आज मैं इंटरनेशनल एग्जाम जो दे के आया IELTS का, उसमें भी यही चीज थी that if you use properly all the coordinating conjunctions while speaking with a interviewer or examiner, then you are going to get lots of you are going to get the best band, that is the highest band, 9 band. अगर coordinating conjunctions सही यूज नहीं कर सकते, you are not able to write or you are not able to speak for a longer duration. Take an example. कभी कभी आप देखे होंगे पैराग्राफ, कभी कभी पैराग्राफ आधे लाइन के बाद खत्म हो जाता है, तुम्हारे 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है. फुल स्टॉप कभी कभी आप देखे होंगे आधे लाइन के बाद ही फुल स्टॉप आता है. कभी कभी 4 लाइन 5 लाइन हो रहे थे, फुल स्टॉप नहीं आता. वही when the writer has used the all conjunctions or coordinating conjunctions or linking words or linkers appropriately, then there is no requirement of stopping or taking a pause while speaking or stopping by putting a full stop in the paragraph. तो ये चीज जहन में रखना है हमारे को, ये conjunction का सही इस्तेमाल आना जरूरी है to speak for a longer duration, to write for a longer duration or longer paragraph. Now third example,
He had, I have taken an example of simple past perfect as well. He had won the competition. He received 10,000 rupees as a prize. As prize. As soon as में कोई confusion नहीं है. He had won the competition. ये confusion है खाली. Full stop की जगह comma. He received 10,000 rupees as prize. हाँ, ये इसीलिए लेना पड़ा ये एग्जाम्पल हार्डली का है. देखिए यहाँ पे ये जो हार्डली क्या है, स्केर्सली क्या है बोले थे ना आप. एक मिनट देखिए जरा, पानी पी ले तो खाली में. Now these are the two sentences for as soon as, no sooner than. But this third example from here, this third example I have just added just to make you people aware about this one more topic which we rarely see yet in our, we have rarely seen in this topic in our books. But this is in your reader guys. ये आपके reader के अंदर है. आप देखे मालूम होता शायद मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैव ऑलरेडी शोन. अगर कोई टीचर शायद हो सकता है कुछ गलती से भूल गए होंगे, इसीलिए मैं ये टॉपिक भी ऐड कर दिया सो दैट आई कुड शो यू पीपल. अगर एग्जाम में आ गया तो यू पीपल फील दैट दिस वी हैव नॉट बीन टॉट बाय आवर टीचर और दे हैव फॉरगॉटन और यू पीपल हैव फॉरगॉटन टू आस्क योर टीचर आफ्टर सीइंग इन योर रीडर. रीडर में रहता ही है. बच्चे भी सिर्फ रीडर लेसन पढ़ने, पोएम पढ़ने देखते हैं. क्वेश्चन भी देखना क्या टाइप के क्वेश्चन है. वी नीड टू आस्क द टीचर्स, right? It's a duty of a student also to hunt what kind of different grammar topics, what are the extra things after a chapter. The writer is not fool, the government is not fool to add the different things in your reader after every chapter. There may be lots of grammar topics. अब आप देख लीजिए, आप पिछले पूरे साल के पेपर्स निकालो, 4-5 साल के पेपर्स निकाल के देखो आप. फ्रेजल वर्ब स्पेशली बता रहा हूं आपको मैं. फ्रेजल वर्ब, ईदर और नीदर नॉर, एज सुन एज, नो सूनर देन, क्वेश्चन टैग, articles, most of the question I can show you people that are from the reader. Reader से ही है. हम सिर्फ ग्रामर की बुक खरीद लेते हैं, बायस पढ़ लेते हैं, या कोई नोट्स ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं. We never touch the reader, right, thoroughly. We need to touch, we need to see the questions which are there after every chapter. आज आप करना है ये. जब आप कल संडे है, आपके पास फुल टाइम खाली रहते हैं, आप घर में चेक करना है पूरे रीडर में कौन सा ग्रामर टॉपिक्स है which has not been taught by your teacher. You need to ask them on Monday and clarify and learn the new topic which you have not yet learned. जो आप अभी तक नहीं सीखे, कंपलसरी सीखना है. ठीक है. So he had won. अब इस दिन में रंदे सर ये as soon as, no, yeah, as soon as कॉमन रहेगा, याद रंदे. अगर 2 मार्क्स में एग्जाम में दे रहा है, reread the sentence by using as soon as and hardly with when. अब जब भी नो सुनर आ रहा है उसके साथ दैन आता है में रंदे. ठीक है. इनकी ये जोड़ी है, इन्हें सेपरेट, इसकी ये जोड़ी है. ठीक है. इसकी ये जोड़ी है और ये हार्डली की, स्केर्सली, बेरली, तीनों में कुछ भी आ सकता है. मगर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको स्केर्सली और बेरली नहीं आया, खाली हार्डली आया बोर्ड एग्जाम में. फिर भी मैं लिख दिया, वो बीच बाद में तो कंफ्यूजन नहीं होना. अगर वो भी आ गया तो आप लिख सकते हैं. तीनों में कुछ भी आते. ये तीनों क्या बताते हैं बोले तो दैट दे शो दैट दीज आर नेगेटिव. हार्डली होंगे और तुम्हारा स्केर्सली होंगे, बेरली होंगे, तीनों नेगेटिव चीज बताने वाले हैं. नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसा नो सूनर हम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा ही ऑन द प्लेस ऑफ नो सूनर वी यूज हार्डली और बेरली और स्केर्सली. मगर इनके साथ हम, इसके साथ हम देन यूज कर रहे हैं, whereas with this we are using when. This you need to remember guys, this is very important. आ सकता है, अगर आ गया तो क्या करेंगे आप. ठीक है. तो इसके लिए मैं ये भी ऐड कर लियो, हैव अ लुक. मगर और एक कंडीशन है इसमें, ऐसा नहीं आता है ना कहां बोले वहां उठेगी. स्पेशल है. ठीक है. स्पेशल बोले तो he will only be asked in, right, past perfect में चाहता है, दूसरी जगह नहीं आता. If the examiner wants you to rewrite the sentence by using hardly, then he or she must give the question in past perfect only. ठीक है. ये कंडीशन है इसमें भी, खाली past perfect में चाहता, दूसरे में नहीं आ सकता. As soon as can be in any, no sooner can be in any tense out of 12. पूरे 12 टेंस में कहीं में आ सकता, मगर ये खाली एक में, इसीलिए उसका एग्जांपल डालिए मैं. ओके. He had won the competition, full stop. He received 10,000 rupees as prize. As soon as में तो कोई confusion नहीं है हमारे को. There is no confusion. As soon as he won the competition, same on the place of full stop we use comma. He received 10,000 rupees as prize. Okay. This is what the as soon as. इसमें कोई confusion नहीं, 1 मार्क्स आसानी से मिल जाता. Okay. Hardly, as you use here,
no sooner. Same on the place of no sooner you have to add hardly. अब देखो जब no sooner हम बना रहे, जब भी हम क्या कर रहे थे, यहाँ देखो, have a look here. No sooner has पीछे ले लिए थे, यहाँ has past है, has पीछे ले लिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए. यहाँ पे भी सेम क्या करना है, no sooner had, जो यहाँ लिए हम he had won है, यही सेम क्या करना है हमको, hardly had he. क्वेश्चन फॉर्म सेम सेंटेंस है, क्या भी नहीं है, कंफ्यूजन मत हो जाओ. नया टॉपिक है, हैबत खाने की कोई जरूरत नहीं. खाली नो सुनर जहां लिख रहे थे वहीं आपको हार्डली लिखना है, बेयरली लिखना है, स्केर्सली लिखना है, और जहां आप व्हेन लिख रहे थे सेम प्लेस यू हैव टू राइट जस्ट व्हेन. दैट्स इट. इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक एज वेल. Have a look. So hardly had he won the competition when he received, sorry, twice. Okay, when he received 10,000 rupees as a prize. This is what. Just on the place of comma, we are using here when. Here, in as soon as we have used, in no sooner we have used here than on the place of the comma. But here we are adding just when. That's it. There is nothing different or difficult to be added or to be written in examination. This is a very easy topic. Okay. ये ज़हन में रखते हैं आपके आराम से. Now let's move towards either or neither nor. This is again going to be for 2 marks in examination. ये भी एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा बस. और इसके अंदर कंडीशन ये है कि सेंटेंस कंपलसरी नेगेटिव में रहना. ठीक है. नेगेटिव में इसलिए जरूरी है कि नो नीदर नॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप. पॉजिटिव में सेंटेंस रहेगा तो खाली ईदर और में कर सकते हैं, मगर नेगेटिव में रहेगा तो ईदर और प्लस नीदर नॉर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये कंडीशन जरूरी है. ठीक है. अब वो ईदर और नीदर नॉर आखिर है क्या सर? What it is in actually. Okay. Either or used in a sentence that is in the affirmative sentence, माने positive sentence, positivity बताने के लिए इस्तेमाल होगा. Sense when referring to a choice between 2 possibilities, माने जो चीज हो सकती है वो possibilities को use करने के लिए either or we use in a sentence. But we use neither nor in a sentence to show the negativity of a sentence. When you want to say that 2 or more things are not true. ठीक है. And it must be negative only. Neither nor में बनाना सेंटेंस है तो क्वेश्चन नेगेटिव में रहना जरूरी है. अगर खाली पॉजिटिव में है तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल टू राइट सेंटेंस और रीराइट सेंटेंस इनटू neither nor. You must write the sentence. The question must be in negative only. ठीक है. Now have a look. He will not go to Bangalore. He will not go to Bangalore by bus. He will not go to Bangalore by train. See, both the sentences have common thing that somebody is not ready to go to Bangalore. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम है. He is not ready. He will not go to Bangalore. He will not go to Bangalore by bus, by train. खाली एक ही चीज क्या एक्स्ट्रा हो रही है? By bus या by train हो रही है. तो बताइए will not go to Bangalore, will not go to Bangalore. There is not at all possibility to use 2 same sentences twice in an examination. क्योंकि इंग्लिश के ग्रामर का सिस्टम है कि it always try to avoid the repetition of words or sentences or group of words in a writing, whether it may be in written or in spoken. Okay. लिखने का रंद है या बोलने का रंद है. कभी भी सेम सेंटेंसेस को डबल लिखने की इजाजत इंग्लिश में नहीं है. So for the purpose of avoiding the repetition of same words during a communication or when you are writing, either or, neither nor have been introduced in grammar. Have a look. Okay. He will not either. सर ये हमारे को कंफ्यूजन होता है कि ईदर और नीदर नॉर हम कहां लगाएंगे. हमेशा याद रखो जब भी आप ईदर लगा रहे हैं इट शुड बी आफ्टर नॉट. ओके. ही विल नॉट ईदर गो टू बैंगलोर बाय बस. और यहां पे जो सेकंड सेंटेंस में जो यहां से लेके यहां तक जो रिपीटेशन हो रहा है इनको उड़ा देना. ये फुल स्टॉप तक पूरा इतने सब चीजों को उड़ा देना. ना द सेम प्लेस यू नीड टू राइट और we'll have a short break for 1 minute only after the explanation of this.
Later we'll continue. Just I'll have some water and a tea. Okay. So he will not either go to Bangalore by bus or train. He will neither. See, on the place of not, where you have written on the same place I'm writing, neither. Should not get any kind of confusion. Okay. Will neither go to Bangalore by bus nor by train. See, on the same place where you have used or we are using nor. Okay. कुछ भी change नहीं है. खाली यहाँ will के बाद not लगाना. He not, he either will not, ऐसा ना को करो बस से. समझ में आ रहा है? He neither will not, will ऐसा ना को करो. ज़हन में रखते आपके कि helping verb के बाद ही आना है. ठीक है. He will neither go to Bangalore by bus or nor train. यहाँ negativity बताना है आपको. जहां भी आप और ले रही हैं वहीं पे नॉर लेना है. जहां आप इधर ले रही हैं वहीं पे आपको नीदर लेके ये टॉपिक करना है. राइट. We'll have a short break for 2 minutes, guys. Later on, we'll continue the same. Have a look.
we have finished right now. Okay, I hope you understood the topic. Now we'll move towards degree the comparison, boys. Okay, have a look. So degree the comparison, there is again one more confusion. When to use very few and when to use very few as well as when to use very few and when to use no other. We'll have some difficulty in understanding this, right? But not to worry now. For plural positive sentence, we have to go always with very few. And when you are writing sentence in singular, you have to go with no other. Remember, this is very important when you are changing the sentences from positive to comparative and from comparative to superlative. This is very important to remember. See, this is the formula what you need to follow. Very few plus subject. Subject could be different. Okay, it could be pronouns, it could be a particular thing and all. Then after that, helping verb. Then as. There should be adjective between two as. You have to think that if there is two as in a sentence, then it is positive. If there will be a word called than, which is usually used for the purpose of comparing, then it will be you will need to think it is in the comparative sentence. Okay, subject plus helping verb, whatever the helping verb we have used there, the same helping verb could be here as depends upon the subject. If the subject would be singular, it could be is or was. If the subject could be plural, then the helping verb could become are or were. Okay. Adjective plus than. And with than, you have to either add many or most other than that particular adjective. In superlative plural, you need to go with subject, helping verb, one of the. This is very important. One of the plus adjective plus est means largest, smartest, smallest. Okay, in this way. Adjective. Like, take an example. Very few schools are as good as wisdom in Bidar. See, I have taken your schools. Remember this word, very important. Schools. जहां भी प्लूरल आ रहा है समझ जाना, वो प्लूरल माने very few का formula है. As this I have taken between two as. Wisdom is better than many. You can take either many or most other schools in Bidar. Wisdom is one of the best schools in Bidar. Right? तो ये ध्यान में रखते हैं. क्वेश्चन आपको अगर 2 मार्क्स कंपलसरी 2 मार्क्स में पूछता है, very rarely it could be asked for 1 marks in objective type. Okay, but if it is asked for 2 marks, it could give you a question in positive and ask you to rewrite into comparative orals in superlative. Okay, अगर superlative में दिया तो positive comparative लिखो बोलता है. आप इतना से याद रखो कि अगर very few आ रहा है तो than के साथ में many other आना है और यहाँ पे compulsory one of the लेना है. ठीक है. अब singular में no other subject plus helping or plus same as adjective as, खाली एक very few की जगह as आ रहा. ठीक है. No other student is as talented as Ravi in 10th standard. यहाँ देखिए student लिया मैं, यहाँ schools लियो इस जन में. ठीक है. Ravi is most talented than any other student. Sorry, more talented than any other student in 10th standard. Whereas Ravi is the most talented. See here I have taken one of the, but here directly the most talented student in 10th standard. This you need to remember. ठीक है. अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता सर हमारे सर प्रिपरेटरी में क्वेश्चन आया था, वहां हमारे कंफ्यूजन हुआ था. क्वेश्चन ये था, दिस इज सो ब्यूटीफुल डायमंड एज दिस. हमारे कंफ्यूजन हो गया वहां कौन सी डिग्री है मालूम ही नहीं हुआ. अब देखिए कॉमन सी बात है, हम यहाँ पे जब गुड लिख रही, ठीक है, तो हम सेकेंड फॉर्म बेटर लिखने जा रहे. अगर हम ब्यूटीफुल लिख रही, ठीक है, तो हम मोर ब्यूटीफुल करेंगे. मोर इज नथिंग बट इक्वल टू सो. ठीक है, सो ब्यूटीफुल बोल रहा हूं, तो मोर सो सेम होगा कंपेरेटिव. एक चीज. अब सर हम लिखना कैसा एग्जाम में, वेरी फ्यू में लिखना मालूम हो गया हमारे को कि कंपेरेटिव है या सुपरलेटिव है मालूम हो गया सर. मगर हम वेरी फ्यू में उसका पॉजिटिव लिखना कि नो अदर में हम उसका पॉजिटिव लिखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी सही है. अब समझना कैसा, मैं इससे पहले बता दिया, बार बार बता रहा हूं कि स्कूल्स वहां खाली डायमंड है. याद रखना प्रिपरेटरी के क्वेश्चन पेपर में आप देखे होंगे डायमंड है. स्कूल्स स्टूडेंट बोल समझ जाना, डायमंड डायमंड्स इधर चले आना पड़ता है वेरी फ्यू के साथ. तो ये ध्यान में रखते कि द वर्ड
on about which we are talking in degree of comparison, whether that is singular or plural, माने whether it is with s or without s, वो समझना जरूरी है, ठीक है। ये इसके जरिए आप समझ सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसा एग्जाम में समझना है हमको और कैसा उसको लिखना है, ठीक है। मोस्टली 99% वैसा क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक कभी भी नहीं पूछा, पहली बार पूछे, फिर भी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। Now analogy guys, this is very again important and this is going to be for 4 mark. एग्जाम में 4 मार्क्स के वास्ते है आपको, and this is one of the easiest topic but we lose marks often in examination. क्यों जाती मार्क्स? पहले देख लो, analogy is something that shows how two things are alike, one is same, but with the ultimate goal of making a point about this comparison. The purpose of an analogy is not merely to show but also to explain, ठीक है। अब देखो यहाँ पहली जोड़ी कैसी है, अगर आप समझ गए, you are able to understand the second pair as well. Archer, archery, carpenter, carpentry. सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहली चीज को देख लो। Height, stature, sorry, height, it should be stature, okay, RE आना, position, status आना है, ठीक है। पोजीशन ये स्टेटस। अब यहाँ पे देखना है हमारे को हाइट, सॉरी ये स्पेलिंग रॉन्ग होगा, यहाँ पे स्टेचर आता है, ठीक है। स्टेचर मींस हाइट को बोलेंगे। वेयर डिड यू लर्न दिस पर्टिकुलर स्टेचर वर्ड? स्टेचर वर्ड वी हैव लर्न इन स्टोलन बोट। When the boy was moving to take a boat towards the second black craggy ridge, they he saw that the stature of the mountain was increasing. वहां का है तो हाइट स्टेचर सेम मीनिंग होती हाइट के, पोजीशन स्टेटस। तो आप पहली चीज समझना कि फर्स्ट जोड़ी वेदर इट इज सिनोनिम और एंटोनिम, ये सिनोनिम है इसीलिए हम आंसर लिखे। अब कभी कभी क्या होता है, प्रेफिक्स भी लेता है इसमें, प्रेफिक्स का सेपरेट कोई क्वेश्चन आया तो आ सकता, नहीं तो नहीं आता, कंपलसरी एनालॉजी में आया था। तो अनेबल, एबल, अरे यहाँ है जी स्टेचर, सॉरी मैं पीछे चले गया, स्टेचर, हाइट, स्टेटस, पोजीशन, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सो स्टेचर, हाइट, दिस इज सिनोनिम, स्टेटस, पोजीशन दोनों आगे साथ में, ठीक है। नाउ एबल, अनेबल, वी आर एडिंग प्रीफिक्स, ठीक है। पहले लगाने वाले वर्ड से पहले जो भी हम वर्ड लेटर्स लगेंगे प्रीफिक्स, बाद में लगा रहे तो सफिक्स, लाइक ब्यूटीफाई का ब्यूटीफुल हुआ सफिक्स, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये पहली जोड़ी को देखना, सेकंड जोड़ी बनाना है। न्यूरोलॉजिस्ट, नर्व्स, ऑर्थोपेडिस्ट, बोन। नॉर्मली एग्जाम में आता है आपको डर्मेटोलॉजिस्ट, और आप देखेंगे सर ये हम लोग कहीं भी नहीं पढ़े ना सर, एग्जाम में कौन से भी चैप्टर में नहीं है, ये प्रोफेशन का क्यों दे रहा सर आखिर हमारे को। कुछ बच्चों के पास ये क्वेश्चन होगा जहन में कि न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का आता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ओक्यूलिस्ट आई का आता है, किडनी का यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट आ सकता है। सर ये कहाँ है लेसन के अंदर, कौन से भी लेसन में हमने पढ़े? लुइस पास्चर which is written by E.H. कार्टर। आप ये चैप्टर पे जाइए, चैप्टर खत्म होने के बाद पीछे देखिए आप, एक 15-20 के ऊपर आपको दे दिया सो है, आप देखे इसने इसलिए मालूम नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट देखे दे आर वेल अवेयर अबाउट दिस, ओके। नाउ एडमायर माने वर्ब से नाउन कर रहा है एडमिरेशन, अप्रिशिएट, अप्रिसिएशन माने वर्ब टू नाउन हो रहा है। अब हम डायरेक्ट खाली अरे इन्हें सफिक्स लगा रहा हम भी लगा देंगे, डायरेक्ट बोले सर नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड्स आर, वेदर it is verb to adverb or verb to adjective or verb to noun. As per that only you'll be able to add the appropriate second analogy word, okay. Now stare, see a homophone can also be asked in exam. Sir homophone क्या होता है? See homophone में दो होते हैं, होमोनिमक होता है, होमोग्राफिक होता है। होमोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में अलग होती है मगर साउंड सेम आती है। होमोग्राफ में दिखती भी सेम, साउंड भी सिमिलर होती है, फिर स्पेलिंग भी सेम होते हैं बट डिफरेंट मीनिंग। लाइक एंट्रेंस, एंट्रेंस एक माने हैप्पी होती है एक के माने, और एक के माने ये इंटर, घर में इंटर होने का, ठीक है। फायर, फायर आज भी होता है, निकाल दिए तुम्हारा नौकरी से, यू आर फायर्ड, तो वो होमोग्राफ होता है, वो नहीं पूछता एग्जाम में, आपको नॉर्मली यही पूछेगा, ठीक है। स्टेर, स्टेर
मीट मीट। तो आपको ये समझना है कि ये होमोफोन है, सेम होमोफोन के हिसाब से लिखेंगे। रिंग, पिंग, कॉल, बॉल, ये आपको राइमिंग वर्ड भी कभी कभी एग्जाम में आ सकती है। तो एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम आ सकता है, सिनोनिम आ सकता है, प्रीफिक्स आ सकता है, सफिक्स आ सकता है, फिर आपको होमोफोन आ सकता है, राइमिंग वर्ड आ सकता है, वर्ब टू नाउन आ सकता है, ये मेडिकल टर्म्स ले सकता है। ये डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर। ये सब चीजों के अंदर आप परफेक्ट रहना जरूरी है। मगर आप पहली जोड़ी समझती तो आराम से आप सेकेंड जोड़ी भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। We'll move for the next slide. यहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है क्या सिंपल कॉम्प्लेक्स 2 मार्क्स में आता है? सी डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। नॉर्मली दिस मस्ट बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स, बट सम टाइम इट आस्क्स फॉर 1 मार्क्स। 1 मार्क्स में कब कैसा देता सर? 1 मार्क्स में मोस्टली इट गिव्स यू एन ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, मल्टीपल चॉइस में आएगा। आपको समझना है कि वेदर द गिवन सेंटेंस और गिवन एग्जांपल इन द और गिवन क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर इज अ सिंपल, compound, or a complex one. That you need to understand, and that is very easy to understand by remembering by remembering just these words. इतने समझ गए तो आप आराम से खत्म। आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 क्लॉज, whereas a compound sentence consists of 2 or more independent clause. ठीक है, a complex sentence has its at least 1 independent clause plus at least 1 dependent clause. Okay, ये देखना है आपको। यहाँ सिंपल 1 आएगा या 1 2 आ सकता है इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट आ सकता है क्लॉज। He lost the case, आप ये याद रखना है। In spite of, having, despite, after, without, being, and these are for simple sentence, and these are for compound, and, or, but, yet, otherwise, so. Whereas these are for complex, compound, complex ऐसा ना, compound, complex, sorry. Okay, if, since, as, though, so, so that, when, unless, although, even though. Have a look example. He lost the case, full stop. He gained lots of admirers. In spite of losing the case, case हार गया फिर भी लोग तारीफ कर रहे हैं। In spite of losing the case, he gained lot of admirers. Simple. In spite of को देख के हम समझ देंगे simple है। He lost the case, yet he gained lot of admirers. He lost the case even though he gained lot of admirers. Second, I arrived at Agra. The meeting took place later. After my arrival at Agra, the meeting took place later. I arrived at Agra and normally sentence है, इसीलिए हम and लगेंगे। जो sentence में कोई बहुत ज्यादा difficulty नहीं है उसको डायरेक्ट आ जाएगा। And meeting took place later. He lost the case. Sorry, when I arrived at Agra, the meeting took place later. Normal sentences हम ले सकते हैं कि he, for example, एक बच्चे का नाम ले लेंगे राहुल। Rahul worked hard. He topped in exam. After working hard, Rahul topped in exam. Rahul topped in exam. Sorry, Rahul worked hard, so he topped in exam. अगर पास टॉप नहीं हुआ, फेल हो गया तो after, in spite of working hard, he failed. After he worked hard, yet he failed. He worked hard even though he failed. फिर टॉप आया बोले तो he worked hard so that he topped in exam. समझ में आ रहा है? फिर ऐसा ये भी ले सकते हैं आप, although he worked hard, he failed. Although he worked hard, he failed. In spite of working hard, he failed. He worked hard, yet he failed. In this way. तो depends, एक से ज्यादा भी आ सकती वर्ड्स, नहीं बोल को नहीं है। ठीक है, ये जरा प्लीज कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आना। ठीक है, वो ऊपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, प्लीज मेक इट एडजस्टेड। ओके, विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये समझने के लिए अगर 1 मार्क्स में आया तो खाली आपको ये वर्ड्स को याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर दीज वर्ड्स।
Here, these words are very important to remember for understanding that these are complex and these are compound, whereas those are simple. अगर आपको ये वर्ड्स याद है तो आप आराम से नॉर्मल क्वेश्चन को सिंपल में बना सकते हैं. जैसे दो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल को आप नॉर्मल क्वेश्चंस है, नॉर्मल को सिंपल, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं. अगर आइडेंटिफाई करने का भी आया बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में, तो यू नीड टू रिमेंबर दीज वर्ड टू गेट इजीली आंसर इन एग्जामिनेशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. Now guys, one of the most important topic, that is direct and indirect. As we all know, most of the students feel difficulty in writing the answers of direct and indirect. First understand what is direct. Direct speech, sorry. Direct, what is direct? Direct is nothing but whatever I'm right now talking with you people, it's a direct speech, right? I'm directly talking to you people, face to face. If you're going on telling your friends, yesterday we have attended a class of first language English webinar where we have learned a number of different grammar topics. It is nothing but you're talking in my absence about me, then it is considered as indirect speech. And you are also going on giving a kind of report to your friends, then it is considered as reported speech. Sir, ये कहाँ यूज होता है? खाली 10th में यूज होता है? नहीं. PUC सेकेंड ईयर में ये टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच बोल के है 5 मार्क्स के वास्ते. For 5 marks, it is in second year, and that is question number 27. 27 question number पे 5 marks के वास्ते आपको डायरेक्ट आता है. And the same rules you need to remember, and the same sentences what I'm teaching you need to remember in examination. ठीक है? तो ये जहन में रख लियो आप, जो टॉपिक्स आप 10th में सीख रहे हैं उसमें कई टॉपिक्स आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हेल्प होने वाले हैं. राइट? ओके, हैव अ लुक. Whenever you find a sentence direct speech has do does या V1 आंदे, जब भी आ रहे हैं तो उसके लिए did हो जाएगा या V2 हो जाएगा. और जब is MR आ रहा है, was were, have as आ रहा had, V2 आया had, V3 has आया had, was were, had been, there is no change. had आया तो had ही जाता, had been आया तो had भी नहीं जाता. will shall का would दोनों में एक ही लेंगे हम. may के लिए might यूज करेंगे, can के लिए could, whereas must के लिए had to, this, that, these, those, ago, ठीक है, ago, before, today, that day, tomorrow, the next day. Sorry, यहाँ द भी आना. The next day, the following day. दोनों में से कौन सा भी एक लिख सकते हैं आप. Yesterday, the previous day, here, there, tonight, that night. मैं कैपिटल लिखी हूं, आप भी कैपिटल लिखेंगे. जो बताने खाली. Said to me हमेशा told me हो जाएगा. Said could be ordered or commanded. अगर कोई टीचर बोल रहा है, teacher said to the students, don't make noise. Teacher ordered the student to maintain silence. Teacher said to the student, maintain silent. Teacher ordered the student to maintain silence. वही अगर मिलिट्री का कोई कमांडर बोल रहा है, stand at ease, तो बोलेंगे हम, the general of the military commanded to stand in a position of prayer. इस तरह से. ठीक है. said के साथ अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये ध्यान में रख लियो आप, said का said नहीं लिखेंगे, asked कर देंगे. अगर कोई क्वेश्चन इंक्वायरी के टाइप में हो रहा है, it has to be written instead of asked, inquired. प्लीज जब भी आ रहा है रिक्वेस्टेड हो जाएगा. और जब भी सेम डब्ल्यू, जो भी डब्ल्यूएच फॉर्म आ रहा है, द सेम डब्ल्यूएच फॉर्म हैज टू बी यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच. हेंस, थेंस, नाउ बिकम्स देन. इतने वर्ड्स अगर आप याद रखते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. हम लोग सम क्वेश्चंस. ओके, देखिए सम क्वेश्चंस की तरफ. He said, I work in Bangalore ago 1 year. He said that. पहली चीज ध्यान में रख लो आप, अगर आप that नहीं लेते तो आपका indirect speech होता नहीं. You have to compulsorily use that. He worked in Bangalore ago becomes before 1 year. ठीक है, ये ध्यान में दे. सेम. अब सर ये ही कहीं को हो रहा है, that I refers to he. उन्हें बोल रहा है कि मैं 1 साल पहले बेंगलुरु में काम करा या करता था या करता हूं. ठीक है. He said that he worked in Bangalore before 1 year. अब ये work V1 जाको V2 हो गया, क्योंकि और वो भी क्यों हो रहा है देख लियो आप अच्छी तरह से. ये said की तरफ से हो रहा है, ध्यान में आंदे. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स. If the sentence is having say, अगर say रहेगा तो he works हो जाता था खाली.
Tense is not going to change. ये पूरा कमाल जो है इसके ऊपर है, said के ऊपर. If there is said in the, that is reported verb is in the past, the tense is going to compulsorily change. ठीक है. तो he said I have finished my homework now. और हमेशा याद रखो, direct speech will be always into the inverted comma and there will be a comma after a reported verb. The quoted words will be always in a double inverted comma. ठीक है. और नीचे indirect में कुछ भी ना comma आता ना inverted comma आता. She said that he, I ka he, have ka, had finished her work, now becomes then. This you need to remember. No change if the reported verb is in simple present. माने जब भी sentence में says आ रहा है, tense change नहीं होगा. As she says, I'm going to Hyderabad. She says that she is going to Hyderabad. अम्मा आता नहीं, वहां से चाहता रुकता है. क्या बोल रहे हैं देखो बच्चे कमेंट में चले. Students, so as I told you that there is no any change if the sentence, if the if the reported verb is in the present tense, the tense is not at all going to change. Only the pronoun gets changes. Like she says, I'm going to Hyderabad. She says that I becomes she because it is referring to she only. That she is going to Hyderabad. See, am going, is, am, are going is a present continuous tense. The tense is not going to change because of only the reported verb is in present tense. And also, no change if the sentence has universal truth. ये भी समझ में कई बार होता है एग्जाम के अंदर that we always go on forgetting just by remembering the tense from present to past, past to was, were to had been. We all go on just thinking over this. But if the sentence is having a universal truth,
there is no change. Whether the reported verb is in present tense or a past tense. You need to remember. Then habitual action, there is also no change in it. And if there is a scientific truth, there is also no change. The tense is not at all going to change, even though the reported verb is in present or a past. अब बीच हम पढ़े कि said रहा तो change होता है, says रहा तो नहीं होता. अब यहाँ जो चीज दुनिया में पूरी सच्चाई है, दुनिया में कॉमन यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप. हैबिचुअल एक्शन है, कोई चेंज नहीं. साइंटिफिक ट्रूथ, जैसा कि एग्जांपल, दे सेड सन राइजेस इन द ईस्ट, हम चेंज कर सकते हैं इसको, बताओ आप. दे सेड दैट सन रोज, पहले सूरज निकलता था मशरिक से, अब घर से निकल रहा हमारे, नहीं. तो ये जहन में रखते, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है. मुल्तानी कॉलोनी से निकल रहा है, ठीक है. शी सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट का, शी सेड दैट सन, she said, sorry, they said, खाली that एक add हो जाएगा, that sun rises in the east, there is no change in it. And if the sentence would be, she said, I wake up at 6 a.m. every day, मैं रोजाना 6 बजे उठती हूँ, उन्हें बोल रही है. अब उन्हें 6 बजे उठती थी नहीं बोल सकते आप. क्यों नहीं बोल सकते? It's a habitual action, because उन्हें रोजाना उठ रही 6 बजे. There is no any change in that, because it is an action of every day. It means it has become her habit. So there is no change in habitual action. याको मगा
सर वहां लगाओ जरा आरने देखेंगे. Okay students, so this is what, so these are the three conditions where again the tense is not going to change. That is in the universal truth, okay, in the universal truth and this habitual action and scientific truth. See scientific truth के लिए example देख लीजिए. He said all the planets revolved around the sun. See still it is going on, अभी भी चल रहा, पूरे planet जो है वो sun के तरफ गोल घूमते हैं. तो he said that all the planet revolved around the sun, same लिखना पड़ता है, इसमें कोई change आप नहीं कर सकते, because this is a scientific truth, right? That has to be accepted, which it was and it will be same in future as well. Have a look over the rules of conditionals. ये भी 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है आपको. To identify the conditional, which conditional it is, we need to know the rules. एग्जाम में रख लीजिए, बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि कंडीशनल टॉपिक थोड़ा टफ है. इट्स नॉट एट ऑल टफ गाइस. जस्ट रिमेंबर व्हेन देयर इज अ सेंटेंस, व्हेन द सेंटेंस इज हैविंग सॉरी आज बेटे इधर आप. हाँ, when the sentence is having V1 in both the sentences, then you need to think it is a zero conditional, whether it may be V1 or V1 plus S. Okay, but both the sentence is having V1 means you need to think it is zero conditional. If the first sentence has V1 plus S or V1 like right or rights, and second sentence will be having will plus V1, then you have to think it is first conditional. In second conditional, the sentence will be in the past, that is simple past. It could be V2, it will be V2, whereas the second sentence will be would plus V1. And when you move towards third conditional, it will be in past perfect by using had plus V3, that is written, and the second sentence would be would have plus V3. Have an example. She buys a mobile, she uses it happily. ये फर्स्ट में भी V1 प्लस यस है, सेकंड में भी V1 प्लस यस है. ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है. अगर हमें वो कंडीशनल बनाना है तो ज़हन में रखते, जब भी हम कंडीशनल यूज कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस में या तो इफ लेना पड़ेगा या नहीं तो आपको इफ लेना पड़ेगा या नहीं बोले तो आपको व्हेन यूज करना पड़ेगा. दोनों में से कंपलसरी, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, मगर कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट में दोनों में ये चाहता. जीरो कंडीशनल के लिए भी एग्जांपल में V1 प्लस यस या V1 ही चाहेगा, एंड फॉर फर्स्ट कंडीशनल आल्सो द सेंटेंस विल बी इन V1 ओनली, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ और व्हेन, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. शी बायस अ मोबाइल, द सेकंड सेंटेंस बिफोर दिस full stop will be converted or replaced into a comma. She uses it happily. And if we move towards first conditional, if or she buys a mobile, comma, she will use it happily. See, we have will plus V1 in first conditional. There is no any kind of helping of directly V1. We have used in the zero conditional. But when you move towards second conditional, the sentence should be, the question should be in simple past. He sold his bike, he bought a new one. When he sold his bike, he would buy a new one. Would के साथ V1 लगाना पड़ेगा अगर V2 आ रहा तो. Okay, now the policeman had captured the criminal. The policeman had captured the criminal, court had punished him. When policeman had captured the criminal, court would have punished him. तो यहाँ याद रखते, जब भी had V3 आ रहा है, it will be with would have plus V3. This is what about conditional. आप इतने चीजें अगर याद रखते हैं, you'll be able to easily remember in exam to get 1 out of 1 marks in conditional in board examination. Okay, this is a quite easy topic. Just only you need to remember V1 plus yes, or V1 with will V1, V2 with would V1, had plus V3, would have with V3. These things you need to remember. Okay, now this is about figure of speech, which is also considered as one of the toughest topic for the student to remember in examination to get 1 out of 1 mark. This is going to be only for 1 mark. Easy है,
बहुत आसान टॉपिक है, खाली डेफिनेशन में एक एक चीज में मैं इसको खत्म कर दूं. You need to remember whenever you find a sentence is having as or like, then it is considered as simile. Okay, and the question is mostly going to ask in these 4-5, but I'm showing you more than 5. Okay, simile, he is like. When you see the like, understand it is simile. Like Bill Gates, she is as her mother, again as simile. Now metaphor is implied simile, माने इसके जैसा है बोलने की जगह. For example, if you are saying a girl, she is like ऐश्वर्या राय, ठीक है, simile हो गया. हम बोले she is ऐश्वर्या of wisdom, she'll become, that sentence will become metaphor. तो ये ज़हन में रखते हैं. हम किसी को किसी के जैसा है बोल रहे तो simile, इन्हें चाहे ऐश्वर्या उन्हें चले गई बोले तो metaphor. समझ में आ रहा है? Have a look. America is a melting pot. If I say America is like a melting pot, simile. America is a melting pot, metaphor. She is a peacock. She is like a peacock, simile. She is a peacock, metaphor. Now personification, animate the inanimate object. माने बेजान चीजों में जान डाल के बताने वाले वर्ड को हम कहेंगे personification. Like flowers are begging for water. सूख गए फूला या मुरझा जा रहे हैं. What we feel that they are asking for water. The flowers are begging for water. You are putting the life in the flower that they are asking water. For that reason, it's personification. Lightning danced across the sky. जब बिजली खड़खड़ाती है, क्या बोलते हैं हम? If we are saying that it's dancing in the sky, again you're putting the life in it. Personification. Oxymoron. Oxymoron में exact opposite word आना, which we call in other words as antonyms. Okay. Stop being a big baby. Big baby is small. Modern dancing is so old fashioned. Modern, old. इस तरह के opposite word आ रही तो oxymoron. I could give you many example, but we don't have that much time. I'm giving the description grammar book in a description box. You can just go on downloading it. There are n number of example in it. Okay. Antithesis, balanced opposite होगा. Antonym नहीं आएगा. Balanced opposite. Prefix लगा सकते हैं. कुछ ऐसे word ले सकते हैं. Man proposes, God disposes. This has asked many time in examination. Prefix लगा के opposite कर दिया उन्होंने. Speech is silver, but the silence is gold. In these kind of opposites you see in antithesis, but in oxymoron, same exact antonyms you find there. Some more examples of hyperbole. Exaggeration means here बड़ा चढ़ा के बोलना. समझ में आ रहा है? मैं सलमान खान से भारी हूं, सलमान खान अलग हम अलग नहीं, तो हम बड़ा चढ़ा को जहां बोल रही हैं वहां आ जाती है हाइपरबोली की बात आ जाती है. समझ में आ रहा है? कोई बच्ची बोल रही है मैं ऐश्वर्या से खूबसूरत हूं बोल रही है तो हम बड़ा चढ़ा बोल रहे हैं. कोई बच्ची थोड़ा मोटी है, हम उसको बोल रहे हैं शी इज लाइक एन एलिफेंट, तो गलत हो जाता है. वहां बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाक बोले सर का होता है. ठीक है, जैसा कि एक सेंटेंस दे दो, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. मेरे को इतनी भूख लग रही है मैं घोड़े खा लेता हूं. पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, राइट? डायनासोर नहीं है हम. तो ऐसा सेंटेंस जिसको बड़ा चढ़ा के हम बताएंगे इट्स हाइपरबोली. ओके. इफ द रिवर इज ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद माय टीयर्स. अगर नदी सूख जाती है तो मैं अपने आंसुओं से भर दूंगा. समझ में आ रहा है? कोई मजाक है? ठीक है, डायलॉग मारने का नहीं. डायलॉग जिसमें मारते देखो बड़ा चढ़ा को. समझ में आ रहा है? तुम जो कह दो तो मैं पूरी तारों को जमीन पे ला लेता हूं. तो ऐसे बड़ा चढ़ा को जो चीजें रहती दैट कम्स अंडर हाइपरबोली. ओके. नाउ नेक्स्ट इज alliteration. Alliteration is nothing but repetition. जहां पे भी जो भी वर्ड दो लेटर रिपीट हो रही या कोई बार बार ट्विंकल ट्विंकल आ रहा है, ऐसा दो वर्ड्स आना या दो तीन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर सिमिलर आना, उसे हम कहेंगे alliteration. Like Sarah's 7 sisters slept soundly in the sand. S, 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 and S. These are the 5 S's you find in it. So that is considered as alliteration. Larry, lizard, like, leaping, leopards. अब बोलेंगे सर like आया तो तुम सिमिली बोले थे. यहाँ आप गौर करिए, खाली लाइव leaping leopard नहीं है, पूरे LL है. You need to observe the sentence, guys. Then only you'll be able to get easily 1 marks in figure of speech. Now assonance. It's repetition of vowel sounds in nearby words. यहाँ सेम वर्ड नहीं आता बल्कि एक दो वोवेल सेम आते. Have a look over. Bake the cake. AKE, AKE means A और E जो है दो वोवेल हैं. And eat quickly. Take the gun. UN and have the fun.
चलो शिकार करेंगे जाको जंगल में, ठीक है। तो ये ऐसा गन बन फन इस तरह है तो समझ जाना, दो वर्ड आ रहे तो इट्स एसोनेंस। सिनकडाकी, अ पार्ट फॉर अ होल एंड अ होल फॉर अ पार्ट, इसमें ज्यादातर मिस्टेक्स होती है हमारे को, बट बहुत इजी एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेजल वर्ब हायर्ड हैंड्स कैन बी यूज्ड टू रेफर द वर्कमैन, ठीक है। हायर्ड हैंड्स माने रेफर्स टू द पीपल हु आर वर्किंग। न्यू व्हील्स, व्हील्स रेफर्स टू अ न्यू कार, न्यू। अब देखो एक टायर देखे तो मालूम है तुमको कि विच पार्ट ऑफ व्हीकल इज दिस टायर, whether it may be of auto, bike or a particular bus or something else. एक एग्जांपल बेहतर बताता हूं। I saw new faces today in the party. आज मैं पार्टी में कुछ नए चेहरे देखा। What does face? Face is a part of our body. So this face is going to describe a particular whole position. माने एक particular एक हिस्से से पूरी बॉडी को बताना या पूरी बॉडी पूरे हिस्से उसमें एक बॉडी के अंदर आ जाना। Part for a whole and whole for a part is synecdoche. Okay, the last is paradox. It is expressing astonishment or disbelief at something unusual or unexpected. It is silly. दिखने में थोड़ा अजीब और गरीब दिखता मगर इसमें एक हकीकत होती है। You can save money by spending it. आप पैसों को बचा सकते हैं जब आप खर्चा करेंगे। आप खर्चा नहीं करेंगे तो नया पैसा नहीं आता। कुछ को खर्चा करेंगे नहीं है, जगह खत्म हो जाती पैसे। तो दिल खोल को खर्चा करो, अल्लाह फिर दिल खोल को देते। आड़ा जड़ा खर्चा नहीं करना बोले तो। Truth is honey, which is bitter. सच्चाई जो है एक शहद के जैसा है, मगर बोलते क्या होता है, लोगों को दर्द होता है। इट फील्स, इट हर्ट्स, राइट। तो ये इसमें सच्चाई जिसमें दिखती है, वैसे सेंटेंसेस को हम पैराडॉक्स कहेंगे। नाउ आर्टिकल्स बहुत आसान है बॉयज, 1 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में आपको। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, आप कंडीशन अगर समझते हैं तो आपको आराम से 1 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ले सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन समझो कि सिंगुलर से पहले चाहता आर्टिकल, प्लूरल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। दूसरी चीज, हम छोटे से क्या पढ़े, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट वर्ड, इतना सीखें। कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं, कॉन्सोनेंट की साउंड आना, मैं इसीलिए डालू कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। ऐसा डेफिनेशन तुम्हारा कहीं भी कौन सी बुक में नहीं है, दीवाना डेफिनेशन समझ में आ रहा, बट क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। तो सिंगुलर भी रहना, कॉन्सोनेंट नहीं रहना, बल्कि कॉन्सोनेंट की साउंड वाला वर्ड रहना। एंड दैट मस्ट बी, अगेन थर्ड कंडीशन है कि काउंटेबल रहना, अनकाउंटेबल से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। लाइक ए बैट, अ कार, अ क्लास, अ पेन, अ यूरोपियन। इसमें भी बार बार हम कंफ्यूजन करते हैं। यूरोपियन वाई ओ से शुरू होता है, वाई इज द कॉन्सोनेंट। सो वी जस्ट नीड नॉट टू जस्ट सी ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड बिफोर एडिंग ए और एन। पहले लेटर को देख को हम डायरेक्ट एन लगा देंगे बोले तो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। अ यूजफुल थिंग, अगेन यूज। A one-eyed woman, a university. These are first letter vowel, but they give the sound of consonant. So we need to observe before adding the articles whether the word gives the sound of a vowel or a consonant. Now N, again in N is having the same condition. First, it should be singular. It should give the sound of vowel. Third, it must be again countable. Like an apple, an ox, an umbrella, an elephant, an MLA. अब देखो MLA, M is a consonant but gives the sound of M, AM. An honest, H is silent. Directly we are putting pressure of sound on O. An R, H is silent. An MP3 player, an unusual, an enemy, an NCC camp, an FM radio. So these are the words which seem consonant but gives the sound of vowel. D is known as the definite article and indicated a specific thing, specific person, specific place, etc. ये कुछ important जगहों से पहले, important चीजों से पहले आता है, सबसे पहले नहीं आता, okay? Name of a rivers, oceans, lake, newspapers, holy books, religion, mountains, unique things, superlative, adjective, one which represents the whole class. In words से पहले आपको आमतौर पे दा लगाना होता है, okay? Active voice, passive voice, ये बहुत जरूरी है बॉयज, ये भी 1 मार्क्स में आएगा एग्जाम में आपके लिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा V1 या V1 प्लस या सारा ESMR के साथ V3 करना। V3 मस्ट बी देयर इन अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहली कंडीशन है इट मस्ट हैव V3। सेकंड, व्हेनेवर यू फाइंड ESMR और was were, it has to be replaced with ESMR. The same helping verb will be used ESMR, but it has to be added with being, उसके साथ में कंपलसरी V3। have, has, had जब भी आएगा उसके साथ been लगा के V3 करेंगे, राइट। V2 जब भी आएगा
was verb के साथ में V3 करेंगे. Can, could, should, would, may, might, must, whatever you see the auxiliary there, you have to just end it with adding a B plus V3. Take an example. She's killing mosquitoes. Mosquitoes are being killed by her. Her help father in the garage. Let the father be help in the garage. Right? ये इतने चीजें आप याद रखें तो एक्टिव एसेस आप आराम से कर सकते हैं. Guys, these are the two poems that you need to remember in examination. एग्जाम में ये दो पोएम है, आपको दोनों में कौन सा तो एक याद रखिए, सॉरी दोनों भी याद रखिए. एंड देयर इज थर्ड पोएम अबाउट लोचिन वर, यू नीड टू रीड. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में से एक कंफर्म बोर्ड एग्जाम, दोनों तीन में से दो कंफर्म आते हैं एग्जाम में. सो दीज टू यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज द वचना एंड दिस इज द पॉइजन ट्री. दीज टू पोएम एंड मोस्टली वचना वचना तो बहुत आसान है, हर बच्चा याद कर सकता है आराम से. और पॉइजन ट्री इट्स नॉट आल्सो डिफिकल्ट, इट इज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट पोएम अमंग योर पोएम्स. तो ये दो याद करें तो बस है, आप एग्जाम में कौन सी भी एक आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं, मगर दोनों अच्छी तरह से याद होना जरूरी है. ये कभी कभी यहां तक देता है एग्जाम में, कभी कभी पूरी देता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर. दिस इज अबाउट रूल्स ऑफ राइटिंग अ लेटर. गाइज ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप रूल्स भी याद करेंगे, पैटर्न भी याद रखेंगे, 2 मार्क्स फॉर्मेट के एग्जाम में, 2 मार्क्स लेटर के है, 1 मार्क्स आपका इंग्लिश का ग्रामर देखती है गवर्नमेंट. ठीक है, तो रूल्स ऑफ राइटिंग है. पहले तो आप नेम लिखेंगे. अब ये ध्यान में रखें, सर मेरा नाम लिखूं क्या मैं? आई हैव सीन मेनी पेपर्स ऑफ बिदर सिटी वेयर स्टूडेंट्स हैव रिटन देयर नेम एंड देयर स्कूल नेम. स्टूडेंट रिटन क्या नाम, सलीम विजडम हाई स्कूल बिदर. आप वहां एग्जाम में देता, इमेजिन you are Krishna or Kirti of Government High School Bijapur. What the name is given in the question that needs to be mentioned here. यहाँ वो नाम लिखना है आपको. Second, you need to write date. अब date कैसा लिखना है ज़हन में रखिए. For example, today it is 12th March 2022. इस तरह से लिखेंगे आप. 12, 2, 3, 22 ऐसा ना को लिखो, छोड़ो. 100% मार्क्स कटेंगे. ठीक है, ये चीज ना करो. टू एड्रेस में टू द हेडमास्टर जो है जिसको भी लिख रही, और याद रखे फ्रॉम नहीं लिखना है आपको, DAT नहीं लिखना है, खाली डायरेक्ट डेट डालना है. TO2 नहीं लिखना है, डायरेक्ट एड्रेस लिखना है जिसका लिख रही हैं आप. एंड इन सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर या मैम, दोनों में कौन सा भी डालिए आप. बॉडी ऑफ द लेटर ये 2 मार्क्स का है जिसको आपको इंफॉर्मेशन लिखना है एज पर द क्वेश्चन. एंड पुट थैंक यू प्लीज, अवॉइड राइटिंग थैंकिंग यू. मैं ज्यादातर बच्चों के देखा दे आर राइटिंग थैंकिंग यू. थैंकिंग यू कंप्लीटली रॉन्ग होता है प्लीज. एंड कॉम्प्लीटली क्लोज तुम्हारा यूवर्स सिंसियरली, और ये यूवर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आना ज़हन में रख दे, ये भी जरूरी है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में अपना नाम जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ सेम इनफॉर्मल में अपना नाम, डेट, उसके बाद रेस्पेक्टेड नहीं आता, सॉरी, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड जो है वो लिखना है इनफॉर्मल में. देन बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूवर्स यहाँ अपॉस्ट्रोफी नहीं डालेंगे, इधर लविंगली और अफेक्शनेटली, नेम मेंशन इन द क्वेश्चन, लास्ट में टू एड्रेस डालेंगे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. लेटर 5 में से 5 लेने. इंपॉर्टेंट एस्से ये रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, इसके कॉजेस, इफेक्ट्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हो जाएंगे. कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स कॉजेस, इफेक्ट्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स टू रिड्यूस इट, स्वच्छ भारत अभियान. ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. See, this is my student, one who has scored 125 out of 125 in English in 2020. ये विजडम के हमारे स्टूडेंट है जिनका नाम शेख सलमान है. He got 125 marks, whatever the strategy wisdom management has planned. जो भी विजडम मैनेजमेंट प्लान करे थे, जो रैपिड राउंड लिए थे, जो टेस्ट लिए थे, जो भी उन्होंने मॉडल पेपर सॉल्व करने लगाए थे, सेम वही चीजें एग्जाम में आने से हम लोगों के टीचर के गाइडेंस सुनने के बाद ये बच्चे को 121 से 125 इंग्लिश में मिले हैं. दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, यू कैन चेक इट आउट. आप भी ले सकती हैं, जब ये बच्चा ले रहा तो आप भी ले सकते हैं, मेहनत की करिए. राइट, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन टेक्स्ट मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर ग्रामर टॉपिक. गाइस, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए. कुछ भी नोट्स वगैरह कौन से भी सब्जेक्ट के होना है तो आई कुड बी सेंडिंग यू थ्रू दिस. All the best, student, for your SSLC board examination 2020-22.
Thank you so much for all this. And see, I am also thankful of Wisdom Management who has organized these webinars for the purpose of benefiting the students. Sir, isko close kar dijiye. Organize this webinar of all subjects. Not only they have bothered for English medium students, क्योंकि Wisdom एक English medium school है और ये English medium school के बच्चों की परवाह नहीं करे बल्कि they bothered for all medium students. ये कन्नड़ा medium students के लिए भी, Urdu medium students के लिए, not only private schools he has worked. Asif sir, he has not only worked or organized these webinars for only private school but also for government school as well. Government aided schools के बच्चों को भी help होने के लिए पूरे subjects के कर्नाटका के जो experts teachers हैं, subject experts, उनके जरिए ये webinars करा रहे हैं. Really, I pray from Almighty Allah to develop this institution day and night a lot, and also give a good reward here and hereafter to the secretary, Mr. Mohammad Asifuddin sir of Wisdom Institution, because of his all these virtuous works. And one more thing, I would like to tell you something about our college, that what are the different facilities we have in our college. If you would like to become a doctor, even though you are raised up from a very local or very backward backgrounds, like join India's #1 team for sure, short seat in 2022 under the exclusive umbrella of Bidar's most trusted name for NEET aspirant. For the first time in the history of Bidar, complete fee waiver to all the NEET 2021 aspirants who scored 425 plus only at Wisdom NEET Academy. The first NEET Academy known for transforming the big dreams into a reality such as below. You guys will be surprised to see the achievements of Wisdom. You just once visit www.wisdominstitution on Google, you see different kinds of our achievements in Google by seeing our images. We have also got a second national level award in 2014 in the science, which was held in Hubli. And have you ever seen a small town cobbler's son become a doctor, but we have made him? Have you ever seen a milkman daughter becoming a doctor? We have proved it by making her dream come true with our expert faculties at Wisdom Institution. Have you ever seen a tailor's son becoming a doctor? We have made many tailor's sons as doctors with the help of our experts and the management who always work hard towards the development of the students. And as he promised at the time of admission that whatever you want, we are going to make you. With the help of, by taking that particular promise in mind, our management, especially our secretary, Mr. Mohammad Asifuddin sir, works day and night for fulfilling the dream of the students. Take an example. Even you will be surprised. रेगुलर बच्चे आपको मेडिकल बनना एक अलग चीज है. जो बच्चों के मार्क्स नीट में चले गए थे और बच्चे अफसोस करके घर में बैठे थे, that they will not fulfill the dream of seeing themselves as a doctor. अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखने का ख्वाब छोड़ दिए थे वो जब मार्क्स कम आ गए थे उनके एग्जाम में. फिर सदर साहब हमारे आसिफ सर घरों को जाकर बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करके मैं आपके बच्चों को सीट दिलाऊंगा, ये वादा कर मेहनत करे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं what was their marks and what is their marks now. Have a look, the miraculous journey of Wisdomites, witnessing the highest success rate and phenomenal growth of average students from a NEET repeater batch. Have a look over the marks of this girl. It was 362 in last year, but that has increased for about 202 marks, and we have helped her to reach to 564 marks this year with our committed faculties. Last year, Zoya Anjum got 401 marks, but this year she got 545 and got a medical seat by increasing her marks, that is 144. Last year, this guy had got 368 marks only, but somehow we convinced to bring him here and made his dream come true by increasing his 143 marks, that is 143, and he has reached to 511 marks. This guy, Sayyid Riyan Hossaini, is our Wisdom student. These two are our Wisdom High School student. These three are our Wisdom High School student who have studied from first and 10th standard Wisdom and also studied the PUC and secured the NEET as well.
This guy has got 438 marks last year, and we have increased his 131 marks, and he reached to 569 this year, and also got the medical seat. Our exclusive features what we follow in our institution to make the student dream come true, that smaller batches for special interactive classes. As we know, if the class is having more than 100 or 50 students, class will not be so interactive, because when quantity increases, quality will compulsorily decrease. For that reason, we have very small batches. Meticulously designed, compact, and the point study materials, pool of best faculty members from various parts of the country. Especially most of our lecturers are from Visakhapatnam, Hyderabad, Gujarat, right, from Narana Chaitanya, Vizag, different places, known for the highest selection in NEET. Regular test series in line with the NEET. Special weekend doubt clarification session. Special NLP session. This, you'll be surprised to listen that who is taking this NLP session. These NLP sessions for regular motivation is taken by Sahaya sir, who is an ex-IAS officer of Andaman Nicobar Islands, that is from Blair. Special quality improvement program, that is QIP for slow learners. We do not leave the slow learners back. We also go on taking them with us by following some strategies to increase their ability. Hurry up, guys. We have very limited seats. We have separate hostel for boys and girls. Admissions are open not only for PUC, this NEET, regular NEET, but also for NEET repeater batches. If you have any queries pertaining to NEET or Wisdom Institution, you can just go on dialing this 1800-123-9447, which is the tool-free number. You can easily get an access. Thank you so much of the management who has given me an opportunity to serve here with my knowledge and my techniques, whatever I had pertaining to the 10th syllabus and grammar that I have explained to people. See, this is what, guys, I was talking about, the scheme of evaluation. The scheme of evaluation है, इसके अंदर क्वेश्चन के साथ आंसर्स है. I'm putting this in the description box. मैं इसकी लिंक डाल देता हूँ. आप देखिए जरा किस तरह के क्वेश्चंस है, किस तरह से एग्जाम में पूछ रहा है और हम किस तरह से लिख रहे हैं. आप देखिए 2 मार्क्स के लिए 4.6 पॉइंट्स है यहाँ पे. Any 2.4 point we need to write for 2 marks. Then में अंदर 2 marks के लिए 4 point लिखना है, 3 marks के लिए 6 point, 4 marks के लिए 8 point आपको लिखना है. देख सकते हैं आप आंसर्स किस तरह से उन्होंने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक आंसर्स है इसका. That you need to read it once and understand this is the scheme of evaluation of board. किस तरह का बोर्ड आंसर चाहता है. सर और कुछ बताना है? Congrats, you bid your congratulations to our wisdom mites who have rocked in NEET examination and secured the free medical seat. This guy has secured free medical seat in Brims, that is Bidar Medical College, and this girl has secured her seat in KBN, that is in Gulbarga, whereas this boy has secured his free medical seat in KIMS, that is in Mangalore, whereas this boy has secured his free medical seat in MR. No. Ya, como...
Yes, guys, as I was telling about that, the Riyan Hossaini has secured free seat in Bidar Medical College, that is PRIMS, whereas Humaira Kashyap got free medical seat in KBN Gulbaga. Fuzail Aslam got KIMS in Mangalore. This Mohammad Irshad Ali, he got free medical seat in MC in Gulbarga itself. And Mohammad Saqib, he got free medical seat in KBN Gulbarga again. So guys, these are our achievements of this year. We have very less students in our NEET class. We just 15 to 20 students will be there in our NEET class. And from them, more than 10 to 15 will be qualified every year. And these are the results you can see here. Guys, the important thing, one more important thing that I would like to say people, कि एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जाइए, डरिए मत, अपने डर को दूर रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, आप मेहनत करेंगे 100% आपको अल्लाह कामयाब करता है. Look at me, I have not only done the state level courses but also national level, international level courses because of my hard works and my efforts behind doing an interest as well as with being confident. मैं सब चीजें जो कर रहा हूँ इतने इंटरनेशनल लेवल पे, आप देखिए सुबह से I have given exam and consistently I am taking this class. सुबह morning 7 to evening 7 तक I take classes every day without taking any kind of break. That is what, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको कोई थकावट नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं होती, आप कामयाब हो सकते हैं. आप ज़हन में कि खुदा भरोसा रखिए, मेहनत करिए, आपको बिल्कुल अल्लाह अच्छे परसेंटेज से पास करते हैं. और 4 चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो मुझे सुन लीजिए. एक, पासिंग पैकेज, जो बच्चे अपने आप को डन समझती, माने कमजोर समझती पढ़े में. सेकंड, ग्रामर की बुक अच्छे एग्जाम्पल के साथ में, क्वेश्चन के साथ में आंसर्स है, वो डाउनलोड कर लीजिए. थर्ड, टॉप बच्चों के लिए जो 80 आउट ऑफ 100 लाना चाह रहे हैं उनके लिए सेपरेट पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर विद एडिशनल्स. चौथी चीज, स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, ये भी डाल दूंगा मैं, ठीक है. और पांचवी चीज, 6 model papers of English with answer key I am going to keep in the description box. वहां से आप आराम से डाउनलोड कर लेके पढ़ सकते हैं. All the very best for your board examination on behalf of Wisdom Management and staff. Thank you so much for being connected with us. Be connected with us till the last day, that is 18th of March, remaining to attend your remaining subjects. Thank you so much, all the students and the management of Wisdom. Working as a assistant English teacher, Government Urdu High School, Bidar. Today I am going to deal with third language English. बच्चों, आपको मालूम है, आप क्या समझते हैं, इंग्लिश बहुत टफ है, इसमें पासिंग करना भी मुश्किल है और स्कोर करना भी मुश्किल है बोल के आप सोचते हैं. वैसा नहीं है. आप कन्नड़ में 49 49
अल्फाबेट्स के साथ पढ़ सकते हैं, बट इंग्लिश में you can go with only 26. So which is the easy subject? English only la. And one more thing, for science we have to study for 3 hours, okay, but in English we have to study for only 1 hour. हाँ, तो आपके पास क्या भी डाउट है, क्या भी है, डर है, तो वो निकल जाना आपके मुंह से, आपके इसमें से निकल जाना. सो फर्स्ट क्या करना हम, हाँ, let me deal me with blueprint of 2022. How many lessons were there? Actually we have 8 lessons, but due to corona that government has KSV board has reduced 2 lessons. Now we have only Chanakya and Rakshasa at the zoo, Kashmir the garden of India, the 2 great magicians Saharab and Rustum, seen from Shakuntala. And here in poetry, Faithful Friends, Autumn Song, The Noble Nature, Prayer for Dumb Creatures, Nurse's Song, It Never Comes Again. Then in supplementary reading, we have to Honest Driver, then Future is Yours, and one more is there. Okay, next in Chanakya and Rakshasa we will get 1 mark question, 2 mark question plus 3 marks, that is reference to context, that is who said this, who was it said, where was it said, like this. So totally Chanakya and Rakshasa will come for 6 marks. And at the zoo में 2 marks के एक आते हैं, फिर 3 marks के, right, 4 to 5 sentences, 3 marks के question आते. Kashmir the garden of India, this is very important lesson, because in this lesson we'll get 1 mark question. आप लोग याद रखना, कंपलसरी कश्मीर में से 1 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन रहता है और 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है. तो और sometimes he may ask for 2 marks question also. Next, the 2 great magician, here also sometimes it will come for 1 mark also. Who was the first magician to be awarded Bharat Ratna, like that. Next, 2 marks question plus 3 marks. Who said this? Who was it said? Who is this referred to? Like that. Next, Saharab and Rustum. In Saharab and Rustum, we'll get 3 marks RC. That is who said this. Next, plus 4 marks. Next, a scene from Shakuntala. Here, 1 mark question, 2 marks question plus 3 marks RC question. And next, poetry. In poetry, we'll go for Faithful Friend. 1 mark question plus 3 marks question. Autumn Song, 2 marks, sometimes 2 marks भी आ सकते हैं, but compulsory 3 marks summary will be there. Then the Noble Nature, there is 1 mark question plus memorization of the poem. Crash or Prayer for Dumb Creature, compulsory in this poem we'll get 3 marks के लिए summary. Next, a Nurse's Song. Nurse's Song में क्या आता है, 1 marks के लिए question आता है and we'll get 3 marks RC. Next, It Never Comes Again. Here also we'll get 1 marks question plus 2 marks question. Totally we'll get 3 marks question in It Never Comes Again. And 4 marks for supplementary reading. That is 1 question, Honest Driver, the future is yours. Okay, next. हाँ, see, supplementary में the future is yours 2 marks, heroes for today, the bicycle thief 2 marks, and the honest driver 2 marks. Here in this year option will be there और बोल के यार, but in bicycle thief और honest driver में direct एक question रहता है. Next, grammar and vocabulary. This is very important for scoring also and for passing also. Here ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರ 1 words. First question ಏನಿರ್ತದ, question number 1, main question number 1, sub question number 1, 1 word substitution will be there. And second, noun. In noun name, what we'll see noun?
he will give one question and underline. Then he will tell name the underlined word. Here for you there are 4 types of noun. First one is common noun. Second one is proper noun. Then third one collective noun. Then fourth is abstract noun. So you know already what is the common noun. Common noun commonly we use the word. For example, the boy, the girl, the school, the village, the Everest, name of the river, like that. In proper noun, particularly name of the person or thing or the thing or the person. For example, Ram, Rahim, Ganga river, Mount Everest, like that. And in collective noun, there will be the group of person, names, or group of the person, animals or things. For example, army. हमको ये वर्ड देखते ही मालूम हो जाते हैं आर्मी में क्या रहता है, ग्रुप रहता है, ऐसा. नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉन. एब्स्ट्रैक्ट नॉन में क्या रहता है, इट डिस्क्राइब्स द पर्सन, काइंडनेस, पॉवर्टी, kindness, intelligence, like that. Okay. Next, preposition. Next, fifth question, framing question. Sixth question, change into assertive. This is very, very easy. He will give one sentence. What a nice flower it is. Example I will give. What a nice flower it is. तो हमारी आंसर में क्या आना, फर्स्ट इट इज. यहाँ पे जो लास्ट में रहते देखो, ये हम क्या करना, फर्स्ट में लिखना. इट इज ए. कंपल्सरी हमको लगाना है यहाँ पे वेरी. कंपल्सरी वी हाउ टू यूज वेरी. इट इज ए वेरी नाइस फ्लावर. यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देते हैं. 4 ऑप्शंस के बाद आपको उसमें जो करेक्ट रहता है, जहां पे वेरी रहता है, उसको देके फिर लास्ट में फुल पॉइंट रहता है, वो देके हम टिक करना. ओके. नेक्स्ट, remove to so that not. Next, active voice and passive voice. Just I will give one example. Rama killed Ravana. So in passive voice में here also you have the 4 options compulsory. Easily you can understand. So what will be the object na? It should become first. What is the object here? Rama. Rama. Then tell me, students, which tense it is? This is the simple past tense. In simple past tense, we have to use the helping verb was or were. Was or were. So helping verb क्या है यहाँ पे? रावणा. तो रामा किल्ड रावणा. रावणा क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है. तो हम क्या यूज करना है? रावणा. हेल्पिंग वर्ब क्या ना? was. नेक्स्ट, किल्ड. कंपल्सरी यहाँ पे हम क्या यूज करना है? V3 फॉर्म यूज करना है. नेक्स्ट, वी हैव टू यूज द प्रीपोजिशन बाय. नेक्स्ट, रामा. ओके. वन मोर एग्जांपल I'll give.
शीला sorry Sheila plays cricket. Which tense it is? This is simple present tense. How you can identify? Because here they are using the V1 form with the yes. Okay. So क्या ना हमारे इसमें file changing from passive active to passive. First we should write cricket. तो सिंपल प्रेजेंट में क्या ना हेल्पिंग और अगर सिंगुलर रहे तो इज आना, प्लूरल रहे तो आर आना. इज और आर. यहाँ पे क्या है? क्रिकेट सिंगुलर. क्रिकेट इज प्लेड. V3 फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड. क्रिकेट इज प्लेड बाय शीला. Okay, one more example I'll give you. But in most time in exam, I'm seeing from since 8 years, they are asking only for past tense. But I will give one more exam. Ramu is eating an apple. Which tense it is? This is present continuous tense. How we should know? By is. Okay. तो इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव करना? फर्स्ट क्या ना हमारे an apple. An apple. Helping और क्या है? Is. In present continuous tense compulsory we have to use is, being, then eat, ate, eaten. V3 form. V1, V2, V3. So, an apple is being eaten by Ramu. Okay. अगर यहाँ पे an apple की बदल अगर apples रहे तो यहाँ पे हमारे क्या आता था? are. An apple are, sorry, an apple are not, apples are. Apples are being eaten by Ramu. Okay. अगर this is past continuous tense रहे तो Ramu was eating apples. यहाँ पे just हमको change करना है helping verb. Instead of are, we have to use were. Apples were being eaten by Ramu. Next, I think all of you understood this. Next, come to active. Next. So, if you go to the weightage to objectives here, in remembering, there totally 16 marks will be there and percentage 20%. Then in comprehension, 27 marks will be there, 34%. In expression, 34 marks question will be there, that is 42%. And in appreciation, there are 3 marks question will be there, that is for 4%. Next. Then, आपको यहाँ पे बच्चे को क्या है मालूम है? 2 साल से कोरोना आने से बच्चे स्कूल को नहीं गए हैं. लास्ट ईयर तो बच्चों को मैसे पास कर दे. तो बच्चों को अब डायरेक्ट क्या हो रहा है मालूम है? डायरेक्ट 10th बोर्ड एग्जाम को अपियर हो रही. इसलिए थोड़े बच्चों को क्या है? डर है. बहुत आज बच्चे हमारे स्कूल में बच्चे पूछते, टीचर मुझे डर हो रहा है, मैं पास होता क्या नहीं. और थोड़े बच्चे पूछ रहे, टीचर कैसे स्कोर होता है कि क्या नहीं, हमको कुछ भी टच नहीं. तो बच्चे डरना जरूर है. मैं थोड़े आपको हिंट्स देती हूँ. वो हिंट्स पे आप गए ने आपको कंपल्सरी आउट स्कोर करने के लिए भी आपको इजी हो सकता है एंड पासिंग के लिए भी इजी है. तो हिंट नंबर 1, go to multiple choice questions.
then the main question number will be there here. Okay, question number 1 to 8. 1 to 8 kya which questions are there? There is a multiple choice questions. There are one question will be there and there will be 4 options. Okay, that is first question for one word substitution. One more thing, students, while writing the answer, how you should write? You should write the question number first. Okay, in first question number, first, second, 3, 1, 2, 3. तो फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन करेक्ट है ए, तो ए लिखना, आगे इसका आंसर भी लिखना. फॉर एग्जाम्पल 2 में आपकी करेक्ट ऑप्शन है सी, लिखना. थोड़ी बच्चे हम एग्जाम एवेल्युएशन को जाते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 1 लेके ए है ना इसको नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर लिखते. ऐसा नहीं करना, 1 लिखना, कंपल्सरी जो ऑप्शन है ऑप्शन लिखे, आगे इसका आंसर भी लिखना. तो कंपल्सरी after one answer you have to leave one line, and this is more important, you have to write the main question number and sub question number. And one more thing, क्वेश्चन पेपर देने के बाद थोड़ी बच्चे क्या करते, दन लेके लिखना शुरू करते. नो, यू शुड नॉट डू लाइक दैट. कंपल्सरी 15 मिनट्स टाइम कई को देते हैं आपको, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देते हैं. तो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आने के बाद आप टेंशन में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर भी नहीं देखते, क्या तो पूछते आप क्या तो लिखते. वैसा नहीं करना. फर्स्ट आप लोग क्या करना, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आने के बाद 15 मिनट्स फ्रॉम फर्स्ट लेसन टू लास्ट, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन तक वो क्वेश्चन पेपर को अच्छा पढ़ना. ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमको क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउन के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्वेश्चन नंबर 3 प्रीफिक्सेस आते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रीफिक्सेस है ना. फॉर एग्जांपल प्रीफिक्सेस ಅಂದ್ರೆ हैप्पी, हैप्पी, मेक द वर्ड हैप्पी बाय यूजिंग द गिवन प्रीफिक्सेस. तो ऑप्शंस रहते हैं अन, इन, इर, इम. तो हैप्पी को क्या लगाई तो हमको ये आता है, अपोजिट आता है अनहैप्पी. तो कंपल्सरी क्या लिखना, ये लिखना. और ऑलरेडी हमारी जो टेक्स्ट बुक में है, लेसन के बाद जो है ना वही क्वेश्चन पूछे, सो बहुत बार वही आंसर्स रिपीट करते हैं. तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सरसाइज दिए टीचर आपको बताई भी होंगी, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विल बी प्रीपोजिशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 5th फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चन. 6th चेंजिंग टू असर्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रिमूव टू सो दैट नॉट. देन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारे हिंट नंबर 2, गो टू 1 मार्क क्वेश्चन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, सी hint number 2, go to 1 mark question. 1 mark question will be very easy. 1 mark question. 1 mark question which from which lesson will be there? That first question, first lesson है हमारा Chanakya and Rakshasa. For example, I will give who became the king of Magadha. What will be the answer? Chandragupta became the king of Magadha. Next, who helped Chandragupta to become the king of Magadha? Tell me, students. हाँ, very good. Chanakya helped Chandragupta to become the king of Magadha. One more question. Who was Chandan Das? Very good. आपको मालूम है Chandan Das was a best friend of Rakshasa. For example, question. Question है क्या है? Who was Chandan Das? आंसर डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना. बेस्ट फ्रेंड
best friend of Rakshasa? No, because here the question is for 1 mark. So we have to write one sentence, full sentence we have to write. That is, who was Chandan Das? Who was Chandan Das? Answer will be Chandan Das. Chandan Das was a best friend of Rakshasa. Compulsory full point. Okay. Next question कहीं पे भी आ सकते हैं. Faithful friend. Who will be your faithful friend? When will be your faithful friend? Okay, like that. Next, which lesson? कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया. ये लेसन में से तो कंपल्सरी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जांपल, which is the garden of India? Kashmir is the garden of India. Which is the capital of Kashmir? Srinagar is the capital of Kashmir. Most time, so many times these questions only repeated. Then where did the travelers enter the valley of Kashmir? At Baramulla. Okay, on this only so many times. Then name the river of Kashmir. Tell me the answer. Which river? Jhelum river. But when you are writing the answer now, that your spelling should be correct. Okay. Then name the peak of Kashmir. Which Kashmir? Which peak? Nanga Parbat. Okay. Next, name the lake of Kashmir. Which lake? Dal Lake. Okay. Then which city is called the Venice of Kashmir? Answer should be Srinagar. Very easy. It is this much easy. You can't understand that much easy is there, but still time is there. You have to study. Next question from the 2 great musicians. Who was the first musician to be awarded Bharata Ratna? When was Bharata Ratna was given to M.S. Subbulakshmi? Who was the first guru in the field of music to Lata Mangeshkar? Like this question will be there. Then which lesson? This in our it never comes again. In here also you will get 1 mark question. Okay. See. Next, hint number 4. Hint number 4 क्या है? Compulsory passing के लिए very important है. Quote poem from the memory. How many poems we have? We have 2 poems for memorization. But आपको जो second poem है वो पढ़ना जरूरी नहीं है, याद करना जरूरी नहीं है. क्यों बोले तो हमको और बोल के ऑप्शन है. यहाँ पे क्या है? और बोल के ऑप्शन है. और memorize, quote the poem from your memory. So or easier means why should go for a second poem? So if we learn the poem, which poem it is? The Noble Nature. The Noble Nature. Who has written this poem? Ben Jonson. One more thing. In 1 more question, he will ask about the poet. Who has written the poem? The Noble Nature. Who has written the poem? Autumn Song, Sarojini Naidu. Who has written the poem? Nurse's Song, William Blake. Who has written the poem Prayer for Dumb Creatures? G. Goodrich. Like that question will be there. We have only 5 poem is there, and you have to remember only 5 poets name. That is the Noble Nature, Ben Jonson. Autumn Song, William Blake. Then Autumn Song, Sarojini Naidu. Prayer for Dumb Creature, William Blake. Prayer for Dumb Creature, G. Goodrich. Okay. Next, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको क्या दे बोले तो कंपल्सरी ऑटम सॉन्ग की समरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग आल्सो एंड फॉर पासिंग आल्सो. ऑटम सॉन्ग समरी और प्रेयर फॉर डम क्रिएचर समरी.
यहाँ पे हमको आते हैं और बोल के आते हैं, तो आप लोगों को क्या करना, ऑटम सॉन्ग की समरी भी कंपल्सरी परफेक्ट करना और प्रेयर फॉर डम्ब क्रिएचर समरी भी परफेक्ट करना. सी व्हाट आई हैव गिवन, इट इज अकॉर्डिंग टू द की आंसर बोर्ड, दैट बोर्ड से हमको की आंसर देते हैं ना, वही है. कैसा, आपको ऐसा पैराग्राफ नहीं लिखना है, ऐसा पैराग्राफ नको लिखो, आपको मार्क्स नहीं मिलता. तो कैसा लिखना है, स्टार लिखना, ऐसा पॉइंट करके. ऑटम सॉन्ग इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू, कंपल्सरी हियर ओनली विल गेट 1 mark. Next, the poet compares the joy in the heart of sorrow to the sunset behind the clouds. She describes how the wild windy breeze to takes away the delicate bunches of wheat and leaves. This makes her heart sad and alone. Her dreams have gone like fluttering leaves. She is very optimistic and not ready to stay behind and wants to move further in life. How many points are there? Only 6 points are there. देन अभी तक टीचर हम टेक्स्ट बुक भी नहीं पकड़े, कुछ भी नहीं पकड़े बोले तो डेली आप वन आंसर इन थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, डेली आप 1 आंसर भी याद करें तो आपको एग्जाम तक कंपल्सरी कम से कम 40 मार्क्स को भी याद, 40 मार्क्स का तो आप ले सकते. देखो कितना इजी पोएम है. इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years, to fall a log at last, dry, bald and sere. Dry, bald and sere. So this is, he will ask for only 4 lines, only 1 paragraph. It is from it से sere तक आ सकते. नहीं तो a lily of a day is fairer for in me. Although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions be just beauty see, and in short measures life may परफेक्ट भी. और पोएम लिखते टाइम ये सब फुल पॉइंट, कोलन, कॉमा, ये सब करेक्ट लिखना. और कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर है वहां पे अब कैपिटल लेटर यूज करना. नेक्स्ट, ऑटम सॉन्ग समरी. नेक्स्ट आते हैं हमारे विच समरी, वेरी इजी समरी, प्रे फॉर डम्ब क्रिएचर. हियर आल्सो यू कैन राइट, हाँ, prayer for dumb creature. This is also for how many marks? 3 marks. Very easy is there. In English now, we don't do hard study. We have to do only smart study. If you do smart study, compulsory will get 60. And how many marks we are giving you? 20 marks internal. So totally how much becomes? It becomes 80. Okay. How to write prayer for dumb creature summary? Here also we have to write 6 points. Prayer for dumb creature is written by G. Goodrich. Second point, he prays to God for dumb creatures. He begins the poem with praising of God as the makers of earth, sea and sky. He blesses dumb creatures, cares them and listens their voiceless prayer. How shall the people dare deny their rights? The poet requested God to teach our hearts to listen the pleas of dumb creatures. Okay, तो बहुत इजी है, डरने का जरूर नहीं है. खाली इतना पॉइंट्स, how many points are there here? 6 points are there, and that is very little lessons are there. Sorry, little sentence are there. Next, prayer for dumb creature और ऑटम सॉन्ग. उसमें से आपको कंपल्सरी परफेक्ट कौन सा आता है वो लिखना. ओके, नेक्स्ट आता है हमारी कंपल्सरी आता है राइट द समरी ऑफ द फेथफुल फ्रेंड. इन फेथफुल फ्रेंड आप कौन से भी क्वेश्चन पूछो, समटाइम्स ही वोंट आस्क फॉर समरी. summary, write the summary of the poem prayer for faithful friend. ऐसा नहीं लिखता. Sometimes what he will ask, write the substance of the summary. Substance also same, the summary also same. Whatever question he will ask, just you go and write the summary. Easily you can pass. So how will be the faithful friend summary? Here also 6 points. Faithful friend never flatters us.
helps us in difficulties and misery, never entice us to vice. Everyone wants to become a friend when we have wealth. None wants to become friend when we lose our wealth. They farewell his great renown. Okay, if you go through this, which one? Autumn song summary, pray for dumb creature summary, and faithful friend summary. And here in 3 marks question, you may get 1 marks question from, it may be from Chanakya and Rakshasa, it may be from Saurabh and Rustum. Sometimes he will ask from At the Zoo, sometimes he may ask from the 2 great magician. Next. हाँ, हिंट नंबर 6, गो टू लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन इतना इजी है, टेंशन लेना जरूर है. कंपल्सरी 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें आपको क्या रहते हैं और बोल के ऑप्शन रहते हैं. हाँ, ओके. इन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या रहते हैं और बोल के ऑप्शन रहता है. आपको दूसरी क्वेश्चन देखना भी जरूर नहीं है. कंपल्सरी द कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया में से 3 क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चन में से कंपल्सरी हम 8 साल से हम देख रहे क्वेश्चन पेपर. कंपल्सरी ये तीनों में से रहते हैं, तीनों में से एक रहते हैं और बोल के कंपल्सरी सोहरब एंड रुस्तुम में से रहते हैं. तो instead of reading that Sohrab and Rustum, here you can get the easily 4 marks. And sometimes see, describe the floating garden of Dal Lake. See how he has given the floating gardens of Dal Lake are unique. Full point. The owners beside the lake make a platform of reeds and anchor it to stakes. Then they place little heaps of mud brought from the bottom of lake on the platform. They plant seedlings of vegetables on them. The gardens require no watering as they are tended from the water extended from the end of the boats. Okay. Question number 2 क्या है? Explain the fruits and flowers of Kashmir. ये पूछ सकता है, नहीं तो describe the spring season of Kashmir. Okay. Question, if he asks fruits and flowers of Kashmir or spring season, there will be only one answer, that is there are rich varieties of flowers and fruits in Kashmir. We get almond and cherry in spring. In late summer, we get lucius pears, peaches, nectarines, plums and apples. Iris and lilac flowers bloom in spring. In summer, roses, red poppies, crimson, scarlet and creamy yellow flowers grow. Next question, why the city of Srinagar called the Venice of India? So, Venice city of Italy is famous for beautiful scenery, islands and canals. In India, Kashmir is famous for beautiful scenery. The Jhelum flows through the city of Srinagar and its canals cut the city into many islands. So the city of Srinagar is called the Venice of India. What is the stuff here? Only 4 sentences are there. In 4 sentences, how many? For some 4 sentences, how many marks you will get? Compulsory 4 marks. So you don't see for the or question, just you go for compulsory यही आता है. और sometimes ये जो है ना, explain the fruits and flowers of Kashmir or the garden of, the same question he may ask for 2 marks. अयो टीचर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ा था खाली उन्होंने 2 मार्क्स के लिए पूछे. No, don't think like that. Whatever he will ask, write the fruits and flowers of Kashmir. Name the fruits and flowers of Kashmir. If you don't know that particular answer, just you go and write this answer. Compulsory will get 2 marks. Okay. Next, this is very important. This is this much important. Hint number 7, for scoring also important and for passing also. इसमें क्या है? Reference to context. और वो भी compulsory हमको इतने lessons में भी नहीं आते. खाली हमको कितने lesson में आते हैं?
4 lessons are there and 1 poem is there. This is so dead easy. And how many marks will be there in this? 15 marks. 3 into 5 are 15. Okay, how will be the question? For example, already students, you have faced the preparatory examination, summative examination and series examination. Already you come to know how will be the question. But फिर भी once again I will repeat you. Chanakya and Rakshasa. Here how you should write? Question is there. Here I am. ये आता है who said this. Next, here I am. Who said this? Who said this? Very good. Rakshasa said this. Your answer will be कैसा लिखना in question? Which question will be there? This is that question number लिखना. Then ये लिखना. ये लिख के Rakshasa said this. You have to write the full sentence. Rakshasa said this. Next, B question क्या रहता है? Who was it said to? Example I am giving. यही आता है बोल के नहीं. Who was it said to? It was said to. It was said to Chanakya. Very good. Next question आता है. Where was it said? Where was it said? हाँ. At the marketplace. Very easy there. This is very interesting part of the question paper and very easily you can get here marks. Sometimes when was it said भी आते question में. When was it said? When was it said Andra? When the head of Chandan Das was cutting off. Okay. So like this will be there. In Chanakya and Rakshas mein here I am is there. Oh, it is Minister Rakshasa is there. Only one thing remained for him there. Just English this much easy. That textbook is there. Within 2 days you can finish the whole syllabus. In 2 days. Only 1 or 2 page lesson is there. Okay. But in for RC questions, reference to context, read the following extract and answer the question. इसके लिए आप compulsory क्या पढ़ना जरूरी है? Lesson पढ़ना जरूरी है. So next हमारे आते हैं question. कौन सी lesson में से आते हैं? The two great musician. In two great musician हमको किसकी किस भी बारे में पढ़ा ऐसा है? Who? Very good. M.S. Subbulakshmi and Lata Mangeshkar. Okay, one example I will give. The music world. The music world and Tamil Nadu have been honored. Tamil Nadu have been honored. Have been honored. So what will be the question? Who said this? Who said this बोले तो यहाँ पे हमको आना है SS Iyer. Okay. Who said this? SS Iyer. Who does this statement refer to? Who does this statement? ये statement किसको लगता है? The music world and Tamil Nadu have been honored. किसको? For to MS Subbulakshmi. Correct लिखना spellings. गड़बड़ नहीं करना. क्यों बोले तो खाली 1 मार्क्स है, इसमें ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है. तो writing only how to write very carefully to MS Subbulakshmi. Next. When was it said? Tell me anyone. When was it said? When the Bharata Ratna, when Bharata Ratna was awarded to, Bharata Ratna was awarded to
MS Subbulakshmi. Awarded to MS Subbulakshmi. सो इसमें आपको याद करना है, क्या याद करना जरूरी है? इसमें SS अय्यर आता है और एक बोले तो SS अय्यर लता मंगेशकर के बारे में आता है, नहीं तो लता मंगेशकर के बारे में तो MS सुब्बुलक्ष्मी बारे के आता है, नहीं तो लता मंगेशकर के बारे में आता है. नेक्स्ट आता है हमारे विच लेसन? सोहरब एंड रुस्तुम. सौरभ एंड रुस्तुम में से आपको क्या आता है मालूम है? इसमें आपको खाली कितने कैरेक्टर्स को याद करना है? सौरभ एंड रुस्तुम में से आपको खाली 3 कैरेक्टर्स. विच आर दोस कैरेक्टर्स? जस्ट आई विल राइट हियर. वंस यू रीड द लेसन एंड इजीली यू कैन राइट द RC क्वेश्चंस. हियर हमको आता है सोहरब. फर्स्ट कैरेक्टर इज सोहरब. सेकंड कैरेक्टर इज रुस्तुम. नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारी तहमीना. वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है. हियर भी हु सेड दिस बोले तो सोहरब, हु वाज इट सेड टू बोले तो रुस्तुम. अगर रुस्तुम का डायलॉग है तो हु सेड दिस बोले तो सोहरब, हु वाज रुस्तुम. रुस्तुम वाज ए फादर ऑफ, सॉरी, रुस्तुम वाज ए सन ऑफ सोहरब. Then who was Thamina? Thamina was the mother of Saurabh. Like that, you can easily, you can understand this RC questions. Next, आता है हमारी scene from Shakuntala. Here nothing is there. 2 policemen. What are the characters here in the scene of Shakuntala? There are only, first character is fisherman. Next, the 2 policemen. 2 policemen or the chief. 3 कैरेक्टर याद करना और एक बार अच्छा लेसन पढ़ने तो आपको इजीली समझ में आता है. नेक्स्ट आता है हमारी which only one poem that is very dead easy poem and interesting poem, which that is a nurse's song. A nurse's song में कंपल्सरी आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है. Whose voices are heard on the green? Whose voices? The children. Okay. So in nurse's song, which are the characters are there? One character is nurse and another character is children. This is very easy. Repeat. Only 3 questions are there. That questions won't be repeated. For example, come, come, live of children. Sir? Yes. Come, come, live of children. Come, come, live off. लिव ऑफ. कम कम बोले तो यहाँ पे क्या, नर्सेस बच्चे खेलते रहते हैं. नर्सेस क्या करते हैं? आओ बच्चे आओ, अंधेरा हो रहे, आओ. कम कम लिव ऑफ चिल्ड्रन. तो कम कम लिव ऑफ चिल्ड्रन. अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमको, हु सेड दिस? हु सेड दिस? कम कम आओ आओ बोल के कौन बुलाते? नर्स. द नर्स सेड दिस. वेरी गुड. द नर्स सेड दिस. Next, who was it said? It was said to the children. Okay, so like this. अगर no, let us play for it is yet today. No, नहीं, हम और थोड़ा खेलते. कौन बोलते? Who said this? Then here it will come the children. The children said this. Who was it said to? To the nurse. To the nurse. Very easy is there. So don't leave. This is a very important 15 marks question. You will get compulsory 15 out of 15. Other than this, he won't ask for other lesson from RC. Okay. I hope all of you understand. Next. Sir, it's not rotating, sir.
Okay. Then hint number 8, that is letter writing. How many marks letter writing is there, students? There are 5 marks letter writing is there. How many marks? 5 marks. This is very important for scoring also and for passing also. In letter, there are 2 types of letter are there. Which letter? First one is official letter. Official letter, and second type is personal letter. Okay, so many times for in official letter na, write a letter to your headmaster to request him to receive your TC, give reasons, or write a letter to your headmaster requesting him to grant 3 days leave. Okay, तो हम देखेंगे कैसा लिखना लेटर. इसमें क्या रहता है? फॉर्मेट, कंटेंट, लैंग्वेज. ओके, लेट वी सी वन पैटर्न. हाँ, सी हियर. लेटर फॉर्मेट ऐसा लिखना. एक इसके लिए लेटर, दिस इज फॉर ऑफिशियल लेटर. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. ऑफिशियल लेटर हमको कैसा लिखना है? एग्जाम्पल आई विल गिव. कैसा लिखना? क्वेश्चन नंबर, इमेजिन यू आर सना और सोहेल ऑफ सोहेल ऑफ 10th स्टैंडर्ड. गवर्नमेंट उर्दू, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल रायचूर. Okay, first you have to understand the letter. What is the letter? What is the from address and what is the to address? क्या बोल के दिए? नो, imagine that you are सना और सोहेल. कौन सा नाम दे है? I will write here सना और सोहेल. इनमें से आपको जो पसंद है वो नाम लिखना. नहीं टीचर, हमको मुझे दोनों भी पसंद है, मेरा नाम लिख के बोले तो यू विल लूज योर मार्क्स. तो सना और सोहेल. सर क्वेश्चन ऐसा रहता है, कैसा लिखना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? क्या लिखना? राइट ए लेटर, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, टू योर हेडमास्टर, रिक्वेस्टिंग हिम to issue your TC. तो हमको मालूम हो गया ना क्वेश्चन क्या है? इमेजिन दैट यू आर सना और सोहेल. तो एक नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग सना. यहाँ पे फॉर्मेट रहता है, देखो, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस, यहाँ पे डेट आना, यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर और मैडम, देन यहाँ पे सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, थैंकिंग यू yours faithfully. Just I will give one example. Sana, I will take Sana. Which standard Sana? 10th standard. Which school? गवर्नमेंट हाई स्कूल, GUHS. पूरा लिखने, यहाँ पे जगह नहीं बोल के मैं कम लिख रही हूँ. गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल बिदर बोल के नहीं लिखना. वहां पे जो एड्रेस देता है वही एड्रेस लिखना, रायचूर. दिस इज द फ्रॉम एड्रेस. इसको याद करने की बैठने का जरूरत नो, ऑलरेडी इट इज देयर इन द क्वेश्चन पेपर. जस्ट हाउ टू नो द ट्रिक्स ऑफ राइटिंग द लेटर. नेक्स्ट क्या लिखना है? यहाँ पे कंपल्सरी डेट लिखना. आप जिस दिन एग्जाम लिखते ना वही डेट को लिखो. आज क्या है? टुडे 12/3/22. इनफ. नेक्स्ट टू एड्रेस. किसको बोल के लेटर लिखना है? हमारे टू द हेडमास्टर. द टू लिखना, टू द हेडमास्टर. नेक्स्ट हियर GU गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल रायचूर. ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे रेस्पेक्टेड सर और मैडम. कंपल्सरी ये भी
लिखना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखना, रिक्वेस्टिंग फॉर, ऑलरेडी इट विल बी इन आवर क्वेश्चन पेपर, वही सेम हमको कॉपी करना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू issue, see it is there in the question paper, to issue your TC. This is the subject. Okay, next, body of the letter क्या आना, ये नहीं लिखना आपके एग्जाम में, ये नहीं लिखना। बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखना मालूम है, वेरी ओनली विद इन 2 sentences you have to finish the letter. See carefully, with regards to the above subject, with regards to the above subject, with regards to the above subject, I, Sana, what the name we have given, that the name only we have to repeat here. I, Sana of 10th standard of your school, I have passed my SSLC. I have passed my SSLC. Next, I need my TC. I need or I want, you can write, I need my TC for my further studies. Next, इसके नीचे और एक लाइन, प्लीज इश्यू द सेम, प्लीज इश्यू द सेम। नेक्स्ट, इसकी लाइन में हमको यहाँ पे नीचे लिखना है, थैंकिंग यू। नेक्स्ट, yours faithfully, ऊपर जो हम नाम देते ना वही नाम सेम इधर आना। yours faithfully, what we have given here, Sana. If you have given Sohail, you can write the Sohail. Sana, finish. See, from address we have anything, we have बैठ के 3-4 घंटे बाहर करे नहीं, कल हमको क्या होना है, हमको हिंट्स मालूम होना है, फॉर्मेट मालूम हो गए तो बस। ये सना हम कहाँ से लिखे टीचर, ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में था, हम वही इसमें हम कॉपी करें। नेक्स्ट, द हेडमास्टर। नेक्स्ट, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर टीसी फॉर TC, requesting him to your TC, enough. Next, body of the letter, this is very important. With regards to the above subject, I, son of 10th standard of your school, I have passed my SSLC exam. I need my TC for my further studies. Please issue the same. Thanking you, yours faithfully. So what is the tough here? Compulsory here you will get how many marks? 5 marks. Okay? How many? 5 marks. One more letter I will discuss you, because so many times we have the 2 letters only. Write a letter to your headmaster requesting to grant your TC, or write a letter to your headmaster to grant 5 days leave or 3 days leave. मैं वो भी एक आपको क्यों बोले तो, this is the in your total in your lesson ना, sorry, in your question paper, this is the highest marks question. One more example I will give you. Okay, one more last example. Imagine you are Neha or Nihal of 10th standard, Government Urdu High School, Hubli. ये क्या है? From address है to address. Next, write a letter to your HM, write a letter to your headmaster, requesting him
requesting him to grant 3 days leave. I am seeing you from 8 years compulsory. एक क्वेश्चन रहता है, नहीं तो टीसी दे बोल के एक रेट रहता है. सो अगर टीसी का हम ऑलरेडी डिस्कस करें, अगर लीव लेटर लिखना है तो कैसा लिखना? सेम पैटर्न. फ्रॉम एड्रेस में क्या ना? निहाल और नेहा. GUHS गवर्नमेंट पूरा लिखना, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हुबली. यहाँ पे डेट आना, सेम डेट 12/3/22. नेक्स्ट किसको लिखना है लेटर? टू द हेडमास्टर. द हेडमास्टर. ओके, हेडमास्टर GUHS गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हुबली. ओके, रेस्पेक्टेड सर मैडम. नेक्स्ट ईयर हमारी सब्जेक्ट क्या ना मालूम है? रिक्वेस्टिंग फॉर. अगर लीव लेटर रहना है तो लिखना है तो क्या ना? रिक्वेस्टिंग फॉर, सॉरी रिक्वेस्टिंग फॉर, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट. हाउ मेनी डेज लीव? 3 days लीव. ओके, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट 3 days लीव, इतना लिखना. देन बॉडी ऑफ द लेटर. नेक्स्ट सेम, विथ रिगार्ड्स टू द अबव सब्जेक्ट. With regards to the above subject. मैं ये क्यों रिपीट करे बोल तो बार बार 8 साल से हमको ये क्वेश्चन रहता है, नहीं तो टीसी दे बोल के रहता है. तो दोनों भी मैं आपको एग्जांपल दे तो आपको एग्जाम इजी हो जाता है. With regards to the above subject, I, which you have written here, Nihal. I, Nihal of 10th standard of your school. Of your school, requesting you to grant me 3 days. Grant me 3 days leave. कब से कब होना वो भी लिखना. From, for example, from Monday you want leave. Today 12 is there, from Monday 14/3 to 22 to 14/15 16 16/3/22. Okay, because I am not feeling well. Enough. Because I am not feeling well. Because I am not feeling well. Next, or you can add one more sentence here. Because I am not feeling well, doctor has suggested me to take the rest. So I am not able to come to school on 3 days. Next, you can add these two sentences also, but this is enough. Please grant the same. अगर टीसी लिखने है तो हम क्या करे थे? issue the same. यहाँ पे क्या करना है? grant करना है. Please grant the same. Next, क्या ना? Thanking you yours faithfully. Instead of सना क्या लिखना हम यहाँ पे? निहाल. ओके, इतना बोलने के बाद भी बच्चे क्या करते मालूम है? एग्जाम में हम so many times we have seen, ये कुछ भी नहीं लिखता. XYZ गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो अपनी स्कूल का नाम रहता है, देखो गवर्नमेंट हाई स्कूल बीदर. If your from address will be wrong na, then totally you will lose the marks. So first we have to read the question paper, and we have that from address and to address, it will be in the question paper, and you have to go through like this, and compulsory you will get 5 marks. I hope students, all of you understand. So this is the format of the letter. अगर आपको आप इसमें पर्सनल लेटर भी लिखना है तो लिख सकते, बट इट इज easy. I think it is easier because here steps are there na, easily we can
easily we can go through these steps. I think students, and one more thing students, if you have any doubts for this, I have my number 9035245827. This number is there. If you have any doubt, you can call me or WhatsApp me on this number. Thank you. Best of luck for your annual examination.